we go through the lower limb. At the end of the lecture, important LAQs, SAQs we discuss. Clinical presentations कैसे आ सकते हैं, clinical cases कैसे आ सकते हैं, that I just give an orientation, a brief idea. Okay, and if your concept is clear, reasoning type of questions will be very easy to understand. Okay, so good evening to all of you. Let us begin now with the lower limb. Okay, so ये जो slide है, which I always draw, this slide, have a look at this. So these are the lumbar vertebrae. ये slide बहुत important है. This slide is same for abdomen also and for the lower limb also. Hi, good evening. I'm starting. अभी सुनो. What is the body of S1 known as? Body of S1 is known as the sacral promontory, right? Sacral promontory. And what is this? That's the ale of the sacrum. Ale of the sacrum. This is the sacrum. ये है pelvic sacral foramen. That's the ale of the sacrum. ये होगा anterior superior iliac spine. प्रैक्टिकल का एक लेक्चर होगा बाद में, हाँ, आफ्टर द थ्योरी, ठीक है. Anterior superior iliac spine, ये है pubic symphysis, ये है pubic crest, that's a pubic tubercle, ये है pecten pubis और the superior ramus of pubis. ये होगा obturator foramen. This is the femur in the acetabulum, ये acetabulum होगा. This is the ischiopubic ramus and ये होगा ischial tuberosity, पीछे की तरफ. So ये है pubic symphysis, that's a pubic crest, that's a pubic crest, that's a pubic tubercle. This is the superior ramus of pubis, जिसे हम बोलते हैं pecten pubis, pecten pubis. हाँ रवि, ओके ओके, ठीक है रवि, ओके. नाउ जस्ट लिसन, बाद में जो भी डाउट्स है विल सॉल्व इट लेटर. नाउ फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, ये कौन है? इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट. नाउ ये पीछे की तरफ है, दिस इज बैक साइड, प्यूबिक सिम्फाइसिस आगे की तरफ है. नाउ बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट देयर इज अ स्पेस हियर, देयर इज अ स्पेस बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट जिसका नाम है पेल्वी फीमोरल स्पेस. नाउ टेल मी व्हाट इज दिस मसल व्हिच बिगिंस फ्रॉम द लंबार वर्टिब्रे. ये लंबार वर्टिब्रे से शुरू होता है and this muscle comes down, goes below the inguinal ligament and gets inserted on the lesser trochanter of femur. Yes, बोलो, इसका नाम बोलिए. This muscle which begins from the bodies of the lumbar vertebrae and gets inserted on the lesser trochanter of femur. Psoas major. So बच्चों इसके साथ अपना hard parts भी हो जाता है, like attachment to the lesser trochanter, psoas major. Along with the psoas major, ये होता है iliacus. There's a muscle here. This is the iliacus. This is together known as the iliopsoas. Iliopsoas. ये भी पीछे गया. So iliopsoas. There's a nerve lying on the psoas major. Anyone? There's a nerve lying on the psoas major. Answer this. Very good. Very good. Nerve lying on the psoas major. This you should know. This we had compared with a muscle in the neck. एंड उसके ऊपर एक हाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम फर्स्ट पार्ट एनाटॉमी 18 को एनाटॉमी 2. हाँ मैं बोलता हूँ बाद में. ओके, विच इज द नर्व लाइंग ऑन द psoas major? स्वप्न में पॉल नहीं. Nerve lying on the psoas major is the genitofemoral nerve. Genitofemoral nerve है ना ये बच्चों. This is the genitofemoral nerve which lies on the psoas major. Genitofemoral nerve divides into a genital branch and a femoral branch. The genital branch of genitofemoral nerve enters the spermatic cord in males or the round ligament of uterus in females, right? The femoral branch of genitofemoral nerve enters the lateral compartment of femoral sheath along with femoral artery. तो femoral artery के साथ femoral sheath में एक nerve होती है, that's the femoral branch of genitofemoral nerve. And genital branch spermatic cord या फिर round ligament में होती है. Fine, that's the genitofemoral nerve. अब ये exactly मैंने एक neck के muscle के साथ compare किया था. Neck में एक muscle होता है which begins from the transverse processes of the cervical vertebrae, inserts on the first rib. कौन था ये muscle? Anyone? हाँ, you can guess this. एक cervical vertebrae से एक muscle शुरू होता है and gets inserted on the first rib on the tubercle here. Guess करो. Guess. What is this muscle? Exactly similar muscle, and on this muscle there is a nerve. बोलो.
हाँ, excellent, very good. Swapna mein, very good. So muscle has scalenus anterior, right? Scalenus anterior. Akshat, very good. So scalenus anterior is exactly similar to psoas major, and जो nerve है scalenus anterior के ऊपर, that's the phrenic nerve. Phrenic nerve. Phrenic nerve की root value है C3, C4, C5, and there's one more accessory phrenic nerve. But so you get an overall orientation. Just listen to the lecture properly. Accessory phrenic nerve arises from C5 root of the brachial plexus. ये हमने last time देखा था, right? Very good. So scalenus anterior and phrenic nerve. Excellent. Very good, all of you. Right. Now you tell me, एक muscle है which begins from this pecten pubis and inserts below the lesser trochanter. Sorry. Begins from the pecten pubis and inserts below the lesser trochanter. ये कौन है? Pectineus. Right. That's a pectineus muscle. अरे रवि कौशिक, बाद में डिस्कस करते हैं. वेट, दिस इज अ लेक्चर फॉर द एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स. ये खत्म करने दो, देन विल डिस्कस इट. ठीक है, देन विल डिस्कस. फाइन. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द पेक्टिनियस मसल. पेक्टिनियस, and there's a muscle which begins from the body of the pubis, and this muscle, I'm so sorry, and this muscle is the adductor longus. ये है adductor longus. ठीक है, तो चार मसल्स हैं, iliacus, psoas major, pectineus and adductor longus. Now there is a muscle which begins from the anterior superior iliac spine. There's a muscle which begins from the anterior superior iliac spine. ये कौन है? What is this muscle? This is the sartorius. ये वाला sartorius आ गया. Fine. So ये बन गया अपना femoral triangle. One of the most favorite LAQ of the lower limb is the femoral triangle, right? Femoral triangle. हाँ, very good, very good, excellent. Good. तो ये आगे से जाएंगे ये मसल, हाँ, ये ऐसे आगे से पीछे की तरफ जाते हैं. So the boundaries of femoral triangle: laterally is the sartorius, the medial border of sartorius. Medially is the medial border of adductor longus. The base is formed by the inguinal ligament. The floor is formed by iliacus, psoas major, pectineus and adductor longus. Perfect. हाँ, sartorius बाद में देखते हैं. हाँ, sartorius बाद में देखते हैं. So that's a femoral triangle. So what are the contents of femoral triangle? So ये muscles भी देख लो साथ साथ में, it will be done. So this is the sartorius, ये है adductor longus. This is iliacus, psoas major, pectineus and adductor longus. ये बन गया अपना femoral triangle. Femoral triangle. Fine. Okay. Fine. So now we come to the next topic, femoral sheath. Femoral sheath. ये क्या व्यू है? कहाँ से लिया ये सेक्शन? This is a, हाँ, how is this section? Contents बोल रहा हूँ मैं. Contents I'm telling you. Ansh, how is this section taken? How is this section taken? ये कैसे section लिया है? बोल सकते हो? This is a sagittal section. ऐसे खड़े हो and that's a sagittal section. ठीक है? So this is anterior. ये होगा anterior and ये है posterior. Posterior. What is this? This is the iliac fossa. Iliac fossa. ये क्या मसल है? What is this muscle? This is the iliacus. Iliacus. Fine. And iliacus के ऊपर there is a fascia. What is this fascia known as? This fascia is known as the fascia iliaca. Fascia iliaca. ठीक है ना? That's a fascia iliaca. This is external oblique, internal oblique, transverse abdominis. This is the fascia transversalis. That's a fascia transversalis. Okay. तो fascia transversalis comes from the anterior abdominal wall. Fascia iliaca पीछे से आ जाता है from the over the iliacus. Iliacus के ऊपर से fascia iliaca आ गया, anterior abdominal wall से fascia transversalis आ गया, and these two fascias are going to form what? The femoral sheath. Femoral sheath. A very important short note, बच्चों, femoral sheath. तो femoral sheath कैसे बनता है? Anteriorly is the fascia transversalis. Very good. All of you answering very well. So that's a femoral sheath. ये जो आगे देख रहे हो, that's a fascia transversalis. जो पीछे की तरफ है, that's a fascia iliaca. Femoral sheath के तीन compartments हैं, lateral, intermediate and medial compartment. Lateral compartment में होता है femoral artery plus the femoral branch of genitofemoral nerve. Intermediate compartment में है femoral vein. And the medial compartment is empty. ये खाली होता है. This is what we call as the femoral canal. Femoral canal. ठीक है ना? The upper part of femoral canal is known as. Answer this. हाँ.
Femoral nerve is not a content of femoral sheath. Yes. Femoral nerve is not a content of femoral sheath, but femoral nerve is a content of femoral triangle. वो femoral triangle की content है. What is this? Femoral ring. हाँ, the upper part of femoral canal को क्या बोलते हैं? Femoral ring. Femoral ring. हाँ हाँ करता हूँ The upper part of femoral canal is known as the femoral ring. What are the boundaries of femoral ring? ये बहुत ज़्यादा important सवाल है. So ये 3 compartments मैंने बनाया है. So this is the femoral ring. Now you tell me number 1, number 2, number 3, number 4. Number 1 कौन है? चलो, we'll start. Number 1. Answer this. The first, the anterior boundary, the medial boundary, the posterior boundary, and the lateral boundary of the femoral ring. Anterior boundary is formed by what? Any guesses? Anterior boundary of the femoral ring is formed by, बच्चों, this you should know. ये MCQs में आता है. ये anteriorly is the inguinal ligament. Very good, Akshat. Anteriorly is the inguinal ligament. इसका दूसरा नाम है Popard's ligament. Popard's ligament. Who's number 2? Medially is the lacunar ligament. Lacunar ligament. And posteriorly is the pectinate ligament. Pectinate ligament or the Cooper's ligament. Cooper's ligament. So anteriorly is the inguinal ligament. जिसका दूसरा नाम है Popard's ligament. Medially is the lacunar ligament or the Gimbernet's ligament. Gimbernet's ligament. Posteriorly is the pectinate ligament or the Cooper's ligament. Cooper's ligament. And laterally, number 4. Number 4 कौन है? Who's number 4? Laterally is the septum separating it from, yes, from the femoral vein. Who's here? Femoral vein. यहाँ पे कौन है? Femoral vein होती है ना? So laterally is the septum separating it from the femoral vein. Very good. Good. And what does this femoral ring contain? I mean, there's a lymph node. This is the lymph node of Cloquet or Rosenmuller. Lymph node of Cloquet or Rosenmuller. And what is this lymph node drain? ये lymph node क्या drain करता है? Answer this. It's just a Viva type of thing. तो आप answer करिए. You will enjoy this. Very good. What is this lymph node of Cloquet drain? Lymph node of Cloquet or Rosenmuller. Fine. Very good. Very good. What is this lymph node drain? Bolo, I'm looking at the comments and your answers. This lymph node drains the glans penis. Tip of the glans nahi. Tip of the penis is glans penis and glans clitoris, right? So this lymph node drains the glans penis or the glans clitoris. This lymph node of Cloquet is a deep inguinal lymph node. ये deep inguinal lymph node होता है. So this drains the glans penis or the glans clitoris. The penis and the clitoris drains into the superficial inguinal lymph node. The glans penis, that's a tip, and the glans clitoris drains into the deep inguinal lymph node. That's a lymph node of Cloquet. ये याद रखना. This is very important. Fine. Okay. So why is this very important? Femoral canal is wider in whom? This femoral ring is wider in females, right? Femoral ring wider females में होता है. ये clinical reasoning में आता है. Why is femoral hernia more common in females? Because femoral ring is wider in females. Why? Because of the pelvis, wider pelvis and the smaller size of the blood vessels. Pelvis wide होता है, blood vessels छोटे होते हैं, तो femoral ring females में wider होता है. So chances of femoral hernia are more common in females. Fine, ये याद रखना. ये reasoning type of question में आता है. Fine. How do you differentiate a femoral hernia from a inguinal hernia? हाँ, बोलता हूँ. Raviur, I'll tell you that. At the end, I'll tell you. हाँ, superficial and deep inguinal lymph nodes बाद में देखते हैं. We'll discuss this. Yes. What I was asking you, how do you differentiate an inguinal hernia from a femoral hernia? What is the point of this? What is the point of identification? ये clinical based question में आता है. You find a swelling in the groins. On examination, the swelling is below and medial to the pubic tubercle. अगर pubic tubercle के नीचे swelling है, तो वो femoral hernia है. If the swelling is above and medial to the pubic tubercle, that's an inguinal hernia. Okay, pubic tubercle के ऊपर and medially है, तो वो inguinal hernia है. Below and lateral is the femoral hernia. Fine. Okay, so that is it. Fine.
राइट, ओके, दिस इज गुड. सो ये फीमोरल शीथ के बारे में लिखना है. सो इफ देयर इज अ फीमोरल हर्निया, व्हाट डू वी कट? अपन लैक्यूनर लिगामेंट को कट करते हैं, बट समटाइम्स देयर इज एन आर्टरी हियर ओवर द लैक्यूनर लिगामेंट. बोल सकते हो? Yes, very good to all of you. What is this? Artery over the lacunar ligament. Sometimes it is present, occasionally होती है, and this is the abnormal obturator artery or the accessory obturator artery. अगर आप इसे कट करते हो तो it will lead to hemorrhage. It would lead to hemorrhage. Okay. Good evening. Good evening. हाँ, abnormal obturator artery. Very good. So abnormal or accessory obturator artery. Accessory obturator artery is a branch of, answer this, accessory obturator artery is a branch of, ये accessory obturator artery है, यानी कि ये normal obturator artery है. बोल सकते हो? हाँ, abnormal obturator artery is a branch of and obturator artery is a branch of. हाँ, answer this, ये दो अलग अलग है. Abnormal obturator artery and obturator artery. हाँ, abnormal obturator artery is the branch of inferior epigastric artery, which is a branch of external iliac. External iliac याद है? Inferior epigastric artery याद है? The same inferior epigastric artery which which forms the lateral boundary of Hasselbalch's triangle. याद है? Hasselbalch's triangle याद है? हाँ, the lateral boundary of Hasselbalch's triangle is formed by inferior epigastric artery. वो same inferior epigastric artery जो direct from indirect inguinal hernia को differentiate भी करता है. So this inferior epigastric artery gives an abnormal obturator artery. Fine. So abnormal obturator artery is a branch of inferior epigastric, which is a branch of external iliac. Fine. Very good. Very good. And obturator artery is a branch of anterior division of internal iliac. Internal iliac. Anterior division of internal iliac. Fine. So just understand this. Yeah, this is a catch. मतलब you have to prove yourself. है ना? Vivas में ये सब पूछते हैं. So if you are able to answer this, then you exceed the other students. Fine. So just remember all this. Abnormal obturator artery is a branch of anterior division of internal iliac. Fine. ये ना obturator artery ना obturator nerve ये दोनों साथ में जाते हैं. They get out through the obturator foramen, right? So the obturator nerve and obturator artery wind around the walls of the pelvis. ये pelvis के walls को wind करते हैं. They get out through the obturator foramen. When they are going around the walls of the pelvis, this obturator nerve and obturator artery forms a boundary of something. Answer this. समझ में आ रहा है ये? ऑब्चुरेटर आर्टरी एंड ऑब्चुरेटर नर्व का एक्सिट क्या है? ऑब्चुरेटर फोरामेन है, बराबर. सो जब ये पेल्विस में होती है, व्हेन इट इज गोइंग अराउंड द पेल्विक वॉल्स टुवर्ड्स द ऑब्चुरेटर फोरामेन, सो इट इज रिलेटेड टू समथिंग. वेरी गुड. इट फॉर्म्स द लैटरल बाउंड्री ऑफ ओवेरियन फोसा. एक्सीलेंट. ऐसे दिस इज हाउ यू शुड बी एबल टू कोरिलेट. सो ऑब्चुरेटर नर्व एंड ऑब्चुरेटर आर्टरी जो है, जब ये ऑब्चुरेटर फोरामेन की तरफ जाती है, इट फॉर्म्स द लैटरल बाउंड्री ऑफ ovarian fossa. Excellent. Very good. Very good. Good. Great. Very nice. Very nice. Chalo. Fine. So that's about the femoral sheath. So what is this? ये बोल सकते हैं what is this structure? See, ये कौन है? This is the fascia transversalis. ये है fascia iliaca. ये femoral sheath के 3 compartments हो गए. What is this structure? This is the femoral nerve. Femoral nerve is not a content of the femoral sheath, right? Femoral nerve femoral sheath के अंदर नहीं होता है. Why? Explain why. Why? Femoral nerve is outside the femoral sheath. Why? Answer this. Why? Because अगर femoral sheath में आना है, if I have to come in the femoral sheath, I should lie on what? I should lie on the fascia transversalis. ये fascia transversalis देख रहे हो? So if I am sitting on the fascia transversalis, ऊपर से fascia, I should sit on the fascia iliaca. I'm so sorry. अगर मुझे femoral sheath में आना है, so I should be lying on the fascia iliaca. So fascia transversalis सीधे आ जाता है. The content is within the femoral sheath. तो जस्ट अंडरस्टैंड, अगर कोई भी स्ट्रक्चर को फीमोरल शीथ में आना है, इट शुड लाई ऑन व्हाट?
fascia iliaca. It should be on the fascia iliaca. अब femoral nerve का क्या होता है? देखो, femoral nerve is lying directly on what? What is this muscle? ये muscle है iliacus. ये muscle है iliacus. Fine. And what is this? What is this? This is the fascia iliaca. That's the fascia iliaca. मतलब femoral nerve जो है, it lies below the fascia iliaca. It lies below the fascia iliaca and on the iliacus. It is lying directly on the iliacus. That is why it is outside the femoral sheath. समझ में आया ये? अगर उसको femoral sheath में आना है तो it should be lying here. It should be lying on the fascia iliaca, जो वो नहीं करता है. That is why the femoral nerve is outside the femoral sheath. Hi. Great. Very good. Very good, Ahmed. Fine. Clear? Clear to all of you? हाँ, ये एक्सप्लेन वाई में आता है. फीमोरल नर्व फीमोरल शीथ के बाहर क्यों होती है? बिकॉज एक ही उसका आंसर है. इट इज बिलो द फेशिया इलियाका. इट इज डायरेक्टली ऑन द इलियाकस. तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? पहले तो शॉर्ट में फीमोरल शीथ के बारे में लिखना है. देन यू हैव टू राइट इफ एनी स्ट्रक्चर हैज टू लाई विद इन द फीमोरल शीथ, उसको फेशिया इलियाका के ऊपर होना है. A femoral nerve is lying below the fascia iliaca, so it goes outside the femoral sheath. ठीक है, तो explain why भी हो गया. Okay. So if you can just answer this MCQ, femoral ring is bounded by all the following structures except. Answer this. Answer fast. Easy है. Femoral artery. ठीक है ना? Very good. Femoral vein होता है वो, femoral artery नहीं होती. Fine. Great. Okay, now coming to the anterior compartment of the thigh. Coming to the anterior compartment. Fine. That's fine. Now come to the anterior compartment of the thigh. देखो, lower limb सबसे easy topic है बच्चों. Lower limb is the most easy topic to understand, to remember, to recollect. एंड उसमें गिन चुन के 4-5 एलिक्यूज हैं, बस उतने एलिक्यूज आपको करने हैं. लोअर लिम्ब इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड टॉपिक, है ना? तो मसल्स वेसल्स ये सब प्रैक्टिकल्स में पूछते हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज मसल्स आर बिग एंड दैट्स वेरी स्कोरिंग, राइट? सो कम ऑन, लेट अस अंडरस्टैंड द मसल्स इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई. वी स्टार्ट विद दिस Sartorius. Now, what is this muscle? That's a sartorius. Sartorius is a very important muscle. Sartorius का origin है anterior superior iliac spine. Sartorius का insertion is on the medial aspect of the shaft of tibia. Medial aspect of the shaft of tibia along with, बोल सकते हो guy ropes है ना, guy ropes. 3 muscles from 3 compartments आते हैं. एक anterior compartment से आता है, एक medial compartment से आता है, एक posterior compartment से आता है. Together, these 3 muscles are known as guy ropes. Name. Name bolo, name. Taylor's muscle is fine, bacha. Taylor's muscle is sartorius, fine. So which are the guy rope muscles? Guy rope. मतलब medial aspect of shaft of tibia पे 3 muscles का insertion होता है. Number 1 is the sartorius from the anterior compartment. Number 2 is the gracialis from the medial compartment. And number 3 is the tendinosus from the posterior compartment. Very good. तो ये 3 muscles को हम बोलेंगे guy ropes. ठीक है? इसका insertion कहाँ पे है? Medial aspect of the shaft of tibia. And ये तीनों muscle का एक common action है. Can anyone tell me what is the action of these 3 muscles on the tibia or on the knee joint? Very good, very good. Sartorius, gracialis and semitendinosus का action on the knee joint. हाँ, very good Anushka, very good SS Chaudhary, Adarsh, हाँ, very good, neat cracker, Pranjal, अच्छा, you are a neat aspirant, okay. इसका एक्शन बोलो, एक्शन बोलो बच्चों. ये तीनों मसल का एक कॉमन एक्शन है on the tibia. It is flexion and medial rotation. Flexion and medial rotation at the knee joint. Flexion and medial rotation at the knee joint. तीनों का common action है. Fine. So what is the action of sartorius on the hip joint? Sartorius का action is what? On the hip joint, it is abduction, flexion and lateral rotation on the hip joint. Abduction, flexion and lateral rotation at the hip joint. Knee joint पे action क्या होगा? Flexion and medial rotation. Flexion and medial rotation.
So Sartorius is known as Taylor's muscle. Sartorius is also known as a honeymoon muscle. Honeymoon muscle is Sartorius. Understand the action: abduction, lateral rotation, flexion at the hip, flexion and medial rotation at the knee joint. Fine, ये याद रखना. So that is the action of Sartorius. ठीक है. Now coming to the next muscle. Fine, done. Now identify this muscles. I'll just put numbers here. This is number 1, this is number 2, this is number 3. Identify this muscles. ये easy है. मतलब Sartorius short note आता है, बाकी short note नहीं आते, but Sartorius comes as a short note, so वो याद रखना. The other 3 muscles are only for practical point of view. चलो answer. Number 1 कौन है? Number 1. Come on बच्चों. Number 1 is a straight muscle. Anything straight is known as rectus. Femoral region का muscle है ये rectus femoris. So 1 is rectus femoris. Number 2, that's a medial aspect. Number 2 is vastus medialis. Number 3 is vastus lateralis. Vastus lateralis. So rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis. अगर ये rectus femoris को निकाल दिया, so what is this muscle? Vastus intermedius. Vastus intermedius. इसका ज्यादा डिटेल्स याद रखने की जरूरत नहीं है. Just remember this muscles together. This 4 muscles forms a quadriceps femoris. Quadriceps femoris, and this quadriceps femoris is inserted on. ये है patella. ये है base of patella. So where is the insertion of quadriceps femoris? On the base of patella. Base of patella पे insertion होता है, and यहाँ से एक ligament बनता है. What is this ligament? इसका नाम है ligamentum patelli. And where is this ligament inserted? On the tibial tuberosity, है ना? ये tibia है. This is the tibial tuberosity. So where is the ligamentum patelli inserted? On the tibial tuberosity. ठीक है, fine. It is inserted on the base of the patella. And from the base of the patella एक ligament शुरू होता है, नाम है ligamentum patellae, inserted on the tibial tuberosity. This patella is a sesamoid bone जो develop होता है tendon of quadriceps femoris में. Fine. So what is the action of quadriceps femoris? Just tell me this. Action of quadriceps femoris है चारों muscles का common action बोलिए. चारों muscle का common action. Yes. What is the action of quadriceps femoris? Answer this. Answer. You should know this. ये कुछ चीजें which you should know. What is the action of quadriceps femoris? Yes. बोलो. It causes extension at the knee joint. Excellent. Extension at the knee joint, and rectus femoris alone. मतलब चारों का एक्शन इज एक्सटेंशन एट द नी जॉइंट, बट रेक्टस फेमोरिस अलोन कॉजेस फ्लेक्शन एट द हिप जॉइंट. रेक्टस फेमोरिस का ओरिजिन क्या है? एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन. एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन. सो आउट ऑफ ऑल दिस क्वाड्रिसेप्स ओनली रेक्टस फेमोरिस विल एक्ट ऑन द हिप जॉइंट. So अगर examiner पूछना what is the action of this quadriceps femoris, so you say sir it is extension at the knee joint. Rectus femoris alone causes flexion at the hip joint. Okay, fine. And second action is it does locking of the knee joint. Locking of the knee joint. एक तो extension at knee joint है, दूसरा है locker of the knee joint. आउट ऑफ दिस 4 अगर एक मसल को सिलेक्ट करना है विच इज अ लॉकर ऑफ द नी जॉइंट, इंस्टेड ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मुझे एक मसल सिलेक्ट करना है. सो व्हाट डू आई सिलेक्ट? लॉकर ऑफ द नी जॉइंट. आंसर. ये एमसीक्यूज में आता है. लॉकर ऑफ द नी जॉइंट इज, नॉर्मली हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, बट इसमें से इफ आई हैव टू सिलेक्ट वन मसल, व्हाट डू आई सिलेक्ट? यस, vastus medialis. Excellent. Vastus medialis. Very good. Akshat working. Very good. So quadriceps femoris तो है ही, but एक मसल सेलेक्ट करना है तो vastus medialis. Single best is vastus medialis. Who's an unlocker of the knee joint? Popliteus. Unlocker है popliteus. Locker is vastus medialis. Excellent. Very good. बहुत अच्छा आंसर कर दो. Excellent. Okay. Now, which is the nerve of this? Nerve of this compartment. ये compartment की nerve है femoral nerve.
Okay, now this femoral nerve is a branch of what? एक मिनट. Okay, this femoral nerve is a branch of lumbar plexus. Lumbar plexus. Fine. Just tell me one thing. एक चीज बोलिए. L234. L234 स्पाइनल नर्व्स, इसका एक डॉर्सल डिवीजन है, डॉर्सल डिवीजन, एंड एक है वेंट्रल डिवीजन. व्हाट इज दिस? वेंट्रल रेमाई. So ventral ramus of L234 nerves. So the ventral ramus of L234 divides into a dorsal division and ventral division. So the dorsal division of the ventral rami of L234 से बनेगा femoral nerve, and the ventral divisions of the ventral rami of L234 से बनेगा obturator nerve. बस ये याद रखना. हाँ, very easy to remember. Any plexus कैसे बनता है? How is a plexus formed? By the ventral ramus. हाँ, so ventral ramus of L234 है. L234 ventral ramus divides into a dorsal and ventral divisions. So dorsal divisions of the ventral rami of L234 से बना femoral nerve, ventral division से बना obturator nerve. Fine, perfect है. Now something more about the femoral nerve. This femoral nerve is outside the femoral sheath. हमने देखा है ये. Femoral nerve is outside the femoral sheath. The femoral nerve lies in a groove. ये कौन है? Muscle iliacus. ये कौन है? Psoas major. What is this groove known as? ये groove का नाम है iliopsoas groove. That's a iliopsoas groove. And the structure lying in the iliopsoas groove. This was a neat PG MCQ. Structure lying in the iliopsoas groove is femoral nerve. Femoral nerve. Exactly. Correlation बोलूं. Structure lying in the, ये कौन है? Deltoid. ये कौन है? Pectoralis major. There's a groove here, the deltopectoral groove. Structure lying in the deltopectoral groove is, answer this. Structure lying in the deltopectoral groove. Cephalic vein. Swapna mein, very good. Yes, Richa. Akshat, very good. Meher. So ये deltoid है, ये pectoralis major है. That was a deltopectoral groove. So structure lying in the deltopectoral groove is cephalic vein. यही cephalic vein बाद में clavipectoral fascia को pierce करती है, and this cephalic vein opens into axillary vein. Axillary vein. This we know. Very good, very good. All of you answering very well. This is how you should be able to answer. This is how you should be able to correlate. Your concept becomes clear. Your MCQs are very easy to understand. You can answer the reasoning type of question also. Okay, good. Right. Now this femoral nerve comes in the femoral triangle. ये femoral triangle में आ गया. Now this femoral nerve has got a trunk. ये कौन है? Trunk. In short मैं बोल रहा हूँ trunk, and इसके दो divisions होते हैं, anterior and posterior. बस ये skeleton याद रखना femoral nerve के लिए. It's perfect. It's very easy. So femoral nerve has a trunk and anterior posterior division. What are the branches from the trunk? From the trunk, one is nerve 2 iliacus and the other one is nerve 2 pectineus. Nerve 2 iliacus and nerve 2 pectineus. Pectineus का lateral half. Lateral half. Because medial half of pectineus is supplied by whom? बोल सकते हो? हाँ, great saphenous vein piercing the cribriform fascia. Excellent, very good. Excellent correlation. Good, good, Richa. Good. Nerve to pectineus, lateral half. Who supplies the medial half of pectineus? So pectineus बन गया अपना composite muscle. Lateral half is femoral nerve. Medial half of pectineus को कौन supply करता है? Anyone? I want a specific answer. ना? Specific answer. Medial half of pectineus का nerve supply बोलिए. ये lateral half हमने लिखा है ना. So medial half of pectineus is supplied by whom? Any guesses? Lateral circumflex femoral artery divides it. It's the anterior division of femoral nerve. Very good. Very good, Dipti. It's the anterior division of femoral nerve. You have to be very specific. But if you have to exceed over the others, you have to get very good marks. So you have to be very specific.
Instead of saying obturator nerve, you should say the anterior division of obturator nerve supplies the medial half of pectineus, right? So it becomes a composite muscle. Clear? Fine. Anterior division gives two branches. Anterior division के दो branches हैं, one muscular branch and two cutaneous branches. One muscular, two cutaneous. Muscular branch to the sartorius and cutaneous branches the medial and the anterior cutaneous nerve of thigh. Medial and anterior cutaneous nerve of thigh. ठीक है? So अगर एग्जाम में पूछते हैं, एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ sartorius. Sartorius तो एकदम क्लियर है, नर्व सप्लाई ऑफ sartorius. Now one student says sir femoral nerve, the other student says sir anterior division of femoral nerve. Okay, so marks किसे ज्यादा मिलेंगे, you can guess this. ठीक है ना? So sartorius is supplied by the anterior division of femoral nerve. So this is how you should answer it. Two cutaneous branches, medial and intermediate बोलो या anterior, same है, medial and anterior cutaneous nerve of thigh. There is a lateral cutaneous nerve of thigh, बोल सकते हो. See, what I'm telling you is anterior and medial are branches of femoral nerve. There's a lateral cutaneous nerve of thigh. Answer this. Lateral cutaneous nerve of thigh, and this is a branch of what? Anyone? Lateral cutaneous nerve of thigh is a direct branch of, yes, lumbar plexus. Excellent. The lateral cutaneous nerve of thigh is a branch of lumbar plexus, and this lateral cutaneous nerve of thigh gets compressed against the inguinal ligament. A person क्या बोलता है? A person complains of paresthesia, tingling and numbness along the lateral aspect of the thigh. ये आप देख रहे हो? ये है lateral cutaneous nerve of thigh. And this lateral cutaneous nerve of thigh comes at the most lateral aspect of the inguinal ligament. ये nerve compress हो जाती है against the inguinal ligament. It supplies the skin on the lateral aspect of the thigh. The person complains of paresthesia, tingling and numbness along the lateral aspect of the thigh. इसे हम बोलते हैं myalgia paresthetica. Myalgia paresthetica. ये क्लिनिकल सवाल आता है. A person complains of pain and paresthesia, tingling, numbness along the lateral aspect of the thigh. What is this clinical condition? And who's compressed? मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. आंसर्स you'll get immediately. फाइन है बच्चों, ठीक है. Okay, now coming to the posterior division. Posterior division gives 4 muscular and 1 cutaneous branch. 4 muscular and 1 cutaneous. 4 muscular branch to quadriceps femoris. 1 cutaneous branches saphenous nerve. 4 muscular branch to quadriceps femoris and 1 cutaneous branches saphenous nerve. This saphenous nerve is the largest cutaneous branch of femoral. The largest cutaneous branch of femoral nerve is saphenous nerve. याद रखना. It supplies the skin on the medial aspect of the leg and the foot. It supplies the skin on the medial aspect of the leg and the foot up to the great toe. ये है saphenous nerve. Xanthony. You attend the HFN lectures. HFN are more beautiful lectures. For you, HFN is more important, right? ठीक है. Thank you. ठीक है बच्चों, ठीक है. So saphenous nerve is the largest cutaneous branch. अगर MCQ आता है, the largest cutaneous branch of femoral nerve, your answer saphenous nerve. What does it supply? The skin on the medial aspect of the leg and the foot up to the great toe. Fine. Okay, just quickly tell me the nerve supply of the foot. हाँ, तो ये खत्म हो गया femoral nerve. The nerve supply of the sole of the foot. हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. And when you're preparing for your MBBS first year exams, you are automatically preparing for your NEET PG exams also, because वही सवाल आते हैं NEET PG में भी. चलो, answer this now. Tell me now, who's this who supplies the skin on the medial aspect of the foot up to the great toe? This is saphenous nerve. यह है sole of the foot. ये sole है, sole of the foot. Now tell me, who supplies the skin on the medial aspect of the great toe? Answer this. Up to the great toe is saphenous nerve. Who supplies the skin on the medial aspect of the great toe? A very important MCQ. Medial aspect of the great toe.
medial aspect of the great toe, ये MCQ आता है. Skin on the medial aspect of the great toe is supplied by, huh? Superficial peroneal. Excellent. Skin on the medial aspect of the great toe is supplied by superficial peroneal nerve. Superficial peroneal nerve. MEAL. Huh? Superficial peroneal nerve. ये जितने भी वेब स्पेसेस हैं, वेब स्पेसेस, दिस इज सप्लाइड बाय द सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व. वेब स्पेसेस समझते हो ना? Web spaces. This web spaces are supplied by superficial peroneal nerve. The first web space is supplied by, another very important MCQ, first web space. This first web space, जहाँ पे अपन slippers पहनते हैं, where we put slippers, हाँ. So the first web space is supplied by what? Very important, very very important. मतलब this you have to know. Yes, बच्चों, the first web space is supplied by the deep peroneal nerve. डीप पेरोनियल नर्व, बस ये याद रखना, ठीक है ना? हाँ, एक्सलेंट. मतलब फर्स्ट वेब स्पेस को डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई करती है. द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेट टो को कौन सप्लाई करती है? सुपरफिशियल पेरोनियल. ऑल द वेब स्पेसेस आर सप्लाइड बाय सुपरफिशियल पेरोनियल एक्सेप्ट फर्स्ट. द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट इज सप्लाइड बाय, यस, सूरल नर्व. Sural nerve. The lateral aspect of the foot is supplied by sural, which is a branch of tibial. ये tibial की branch है. The heel is supplied by what? The heel is supplied by tibial nerve. 3.5 fingers is supplied by medial plantar nerve, and this is lateral plantar nerve. 3.5 fingers is medial plantar, 1.5 fingers is lateral plantar. Same like median and ulnar nerve. ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? बस ये दिस यू हैव टू नो. ओके, वेरी इजी. ये डायग्राम याद रखना. इसमें एमसीक्यूज ऐसे आता है. स्किन ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फुट अप टू द ग्रेट टो, इसे कौन सप्लाई करता है? सैफिनस नर्व. मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेट टो, सुपरफिशियल पेरोनियल. ऑल द वेब स्पेसेस, superficial peroneal. The first web space, deep peroneal. The lateral aspect of the foot, sural. The heel, tibial. 3.5, 1.5 fingers को कौन सप्लाई करता है? ये याद रखना. So medial and lateral plantar nerves are branches of what? ये दोनों branches है tibial के. ये tibial nerve की branch है. Fine, perfect. Okay, that's it. Okay, I hope this is clear to all of you. So anterior compartment, बस ये याद रखना है आपको. Just remember this for the anterior compartment. Femoral nerve, very easy. This is what is expected, what is required. Fine. Okay, right. Now coming to the medial compartment of the thigh. Medial compartment easy है. This doesn't come in theory, बस adductor canal theory में आता है. हाँ, Hi, thank you. Adductor canal comes in the theory, but let us just understand the muscles in the medial compartment. Huh? I'll start. Muscles in the medial compartment. I'll just put numbers here. This is number 1, जिसे हमने cut किया है. This is number 2. This is number 3. This is number 4. हाँ, this is number 5. बोल सकते हो? Any guesses? Yes, बच्चे. This is for anatomy. Anatomy is there for everyone. Hi, Chitrali. करते will do an abdomen. अभी upper limb lower limb के बाद thorax आएगा, फिर abdomen आएगा. हाँ, thorax फिर abdomen. Next Thursday. फिर HFN, फिर neuroanatomy. ठीक है? Okay, बच्चों, tell me which are the muscles in the medial compartment of the thigh. Medial compartment of the thigh, adductor compartment. So one कौन है? One adductor longus. One is adductor longus. One is adductor longus. Adductor longus ऐसे था, देखो, we have cut the adductor longus. Adductor longus को cut किया. 2 is adductor brevis. 3 is adductor magnus. 3 is adductor magnus. 4 कौन है? 4. हाँ, gracialis, very good. Excellent बच्चों, very good, excellent. 4 हो गया. हाँ, 5 कौन है? 5 is obturator externus. Obturator externus, very good. हाँ, fine. That's okay. 5 is obturator externus, but बच्चों, you cannot see the obturator externus. Obturator externus नहीं दिखता है. Yes. Why? Because someone is covering the obturator externus. Can anyone tell me what is this muscle? What is this muscle which was beginning from here? And ये obturator externus को cover करता है. A muscle which begins from the pecten pubis.
A muscle which begins from the pecten pubis, a muscle which is present in the floor of the femoral triangle. चलो बोलो बच्चों, what is this? ये क्या muscle है? Pectineus. Excellent. Very good. Very good. That's what I want your concept to be. Excellent. So that is pectineus. ये pectineus है. लास्ट ईयर के फरे देख लो बच्चों, लास्ट ईयर के, इफ योर एग्जाम्स आर क्लोज है ना तो लास्ट ईयर के फरे देख लो. सो दिस इज पेक्टिनियस बच्चों. पेक्टिनियस, अगर मैं पेक्टिनियस को निकाल देता हूं, इफ आई रिमूव द पेक्टिनियस, यस, व्हाट्स दिस मसल? ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस. ये है ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस. क्रिश, जस्ट वेट क्रिश, बाद में बोलता हूं मैं. ओके, नाउ ये जितने भी मसल्स है ना एडक्टर कंपार्टमेंट में, दे डू एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन. एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन. बस एक exception है, that is obturator externus. What is that exception? Obturator externus पीछे जा रहा है. देखो obturator externus पीछे जा रहा है. So when it contracts, it turns the femur like this, like this. What does it do? Obturator externus is the only muscle in the medial compartment which does lateral rotation. Very good. ये क्या करता है? lateral rotation. बच्चों बस ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है. सो जितने भी मसल्स हैं मीडियल कंपार्टमेंट में, व्हाट डू दे डू? एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन, एक्सेप्ट लैटरल रोटेशन. हाँ, एक्सेप्ट ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस व्हिच डज लैटरल रोटेशन. हाँ क्रिश, विल डिस्कस दिस लेटर. हाँ, फाइन फाइन, ओके 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 ओके. लुक नाउ, सी दिस इज सो नाइस. इफ यू कैन अप्रिशिएट दिस, what is this nerve? What is this plexus? That's a lumbar plexus. And what is this branch of lumbar plexus? That's the obturator nerve. This is obturator nerve. Now what is this? ये क्या है? Ala of the sacrum. ये क्या है? Ala of the sacrum. What are the relations of the ala of sacrum? Relations of the ala of sacrum. ये पता है आपको? SLIO. Medial to lateral. Medial to lateral. SLIO. हाँ, gracialis is inserted on the tibia. Yes, gracialis is inserted on the tibia. But gracialis does medial rotation, है ना? What is S? Structures related to the ala of the sacrum. पहला तो S होगा sympathetic chain. हाँ, ये यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, तो ये ऐसे आएगा sympathetic chain. What is L? हाँ, L कौन है? L. L is the lumbosacral trunk. Lumbosacral trunk. L is the lumbosacral trunk. फिर एक artery आती है. This is the lumbosacral trunk. फिर एक artery आती है. What is this artery? Artery is I. आर्टरी का नाम याद है? Sympathetic chain, lumbosacral trunk, I is an artery and O is the obturator nerve. I कौन है? Answer. I कौन है? Who's I? मतलब देखो, everything gets covered है ना. Now we are discussing the pelvis. Iliofemoral नहीं है. Iliolumbar. Very good. स्वप्न में, it's iliolumbar artery. Iliolumbar artery. Yes. It's iliolumbar artery. Fine. Very good. Very good. Excellent. So sympathetic chain, lumbosacral trunk, iliolumbar artery and the obturator nerve. ये है relations of the ala of sacrum. Very important. MCQ में आता है, Vivas में भी पूछते हैं. Fine. Now this obturator nerve is winding around the walls of the pelvis. देखो, it is winding around the walls of the pelvis. When it is winding around the walls of the pelvis, there's an organ here in the lateral wall of the pelvis. In the lateral wall of the pelvis, एक organ है, एक घर है. There's a house of that organ, and this house is the ovarian fossa. This is the ovary. So what is the relation of the obturator nerve with the ovary? It forms the lateral wall of the ovarian fossa. Lateral wall of the ovarian fossa is formed by the obturator nerve. ठीक है? It forms the lateral wall of ovarian fossa, and when the ovary is inflamed, ovary जब inflame होती है, the obturator nerve is irritated. The pain is referred along the medial aspect of the thigh. याद रखना, very important. Pain is related along the medial aspect of the thigh. जब सोनोग्राफी करते हैं, पर्सन टेल्स पेन अलोंग द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई, मेडिसिन देते हैं, ठीक नहीं होता, वी डू अ सोनोग्राफी. सोनोग्राफी में दिखता है द ओवरीज आर इन्फ्लेम्ड. ओके, फाइन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, great. Now this obturator nerve comes out through the obturator foramen, and when the obturator nerve gets out through the obturator foramen, it divides
into an anterior and a posterior division. Anterior and posterior division. What is the anterior division supply? What is the anterior division supply? Adductor longus, adductor brevis, gracialis, and pectineus. Medial half of pectineus, medial half. So adductor longus, adductor brevis, gracialis, and medial half of pectineus. What is the posterior division supply? Adductor magnus and obturator externus. See बच्चों, one very common क्या बोलो उसको misconception, adductor brevis है ना, adductor brevis is not supplied by both the nerves. Adductor brevis is normally supplied by anterior division of obturator nerve. Adductor brevis is normally supplied by the anterior division of obturator nerve. अगर anterior division नहीं supply करता है, then the posterior division supplies. It is either anterior or posterior. दोनों supply नहीं करते. Occasionally brevis reach, if not supplied by anterior division. Fine. Okay, clear, perfect है. Obturator nerve, ठीक है, लिख सकते हो. All the MCQs with respect to the obturator nerve, the clinical questions are clear to all of you. The course of obturator nerve is clear to all of you. Fine, great. Now, एक adductor canal बोलता हूँ. Adductor canal. Adductor canal is generally very confusing for the students. So adductor canal है ना. एक मिनट, I'll just draw a slide for you. See here. ये है अपना femur. This is the femur. I'll just draw the adductor canal for you. This is femur. This is medial, this is lateral. ये medial lateral है. So what is this muscle? What is this muscle? What is this muscle? ये है vastus medialis, ये है vastus lateralis, ये है vastus intermedius. ठीक है ना? Femur का section लिया हमने. We have taken a section through the femur. This is vastus medialis, this is vastus lateralis, this is vastus intermedius. अब नीचे की तरफ आइए. Medial compartment का. What is this muscle? This muscle of the medial compartment is adductor longus और नीचे जाओगे adductor magnus. मतलब ये कैसे है ना? Okay. It would be a composite muscle if it is supplied by both the nerves. मतलब ऊपर की तरफ adductor longus and नीचे की तरफ adductor magnus. I can't draw it in the slide like this, so I have drawn both the muscles. मैंने दोनों muscles draw किए. मतलब ऊपर की तरफ what is this muscle? Adductor longus. अब नीचे की तरफ कौन होगा? Adductor magnus. This area is the adductor canal. Adductor canal. So who's forming the superior boundary of adductor canal? ये कौन muscle है? Vastus medialis. Inferior boundary is formed by adductor longus in the upper part, adductor magnus in the lower part, and the roof is formed by what? Sartorius. समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया? So ये ऐसे है. आपका medial aspect of thigh देख लो. You see your medial aspect of thigh. ये कौन muscle है? ये कौन है? Vastus medialis. नीचे कौन है? Adductor longus in the upper part, adductor magnus in the lower part, and the roof is formed by the sartorius. बस इतना याद रखना. This is adductor canal. It's very simple. What are the contents of adductor canal? बोल सकते हो? Contents of adductor canal is femoral artery, femoral vein, then there's a nerve too. Vastus medialis, then there's a nerve here, saphenous nerve, and there's one more, that's a posterior division of obturator nerve. Posterior division of obturator nerve. बस इतना याद रखना है. Adductor canal comes as a short note. हाँ बच्चे, short note आता है, तो you just have to draw this diagram. ये diagram draw करना, it's enough, and then you write the boundaries of adductor canal. Fine. Femoral vessel, saphenous nerve, nerve to vastus medialis, and the posterior division of obturator nerve. These are the contents of adductor canal. Fine, बस ये याद रखना. MCQs में भी आता है adductor canal. हाँ, MCQs में भी आता है adductor canal के contents. It is very confusing. कभी-कभी nerve to vastus intermedius देते हैं. So you should know this. Okay, that's it. Now coming to the posterior compartment, easy है. Again, posterior compartment, what is this group of muscles known as? What is this group of muscles known as? Hamstrings. Hamstrings. When do you call a muscle as hamstring? ये मैंने बोला है. When do we call a muscle as hamstring? Origin, insertion, nerve supply, action.
बोल सकते हो. Origin ischial tuberosity, insertion tibia or fibula, nerve supply, the tibial part of sciatic nerve, and action of all these muscles in the posterior compartment. They cause extension at the hip joint and flexion at the knee joint. Extension at hip and flexion at the knee joint. Fine. So this are the hamstring muscles. ये याद रखना. Again, this comes as a short note. Short note आता है hamstring muscles. तो आपको criteria for hamstrings लिखना है. Origin ischial tuberosity, insertion tibia or fibula. Nerve supply is the tibial part of sciatic nerve. Action, extension at the hip and flexion at the knee joint. Fine. Now you tell me, out of all these muscles, which muscle is not a hamstring? Which muscle is not a hamstring? Deep circumflex iliac. Deep circumflex iliac. It's a branch of external iliac. बच्चे अक्षत external iliac की branch है. External iliac के दो branches हैं. एक है inferior epigastric artery and दूसरा है deep circumflex iliac artery. Right? Which muscle is not a hamstring out of all this? Answer. You should know this. Short head of biceps femoris is not a hamstring. Very good, Mohit. Very good, Richa. Swapnamai, Akshat. Very good, Dipti. Kamlanin. Sinchana. Very good. Yes. Neat cracker. Got the B hope. The short head of biceps femoris is not a hamstring. Why? ये explain why में आता है. This comes in explain why. Reasoning type of question. Why is the short head of biceps not included in the hamstring? Why? Because number one, it doesn't arise from ischial tuberosity. वो ischial tuberosity से origin नहीं करता है. It arises from linea aspera. उसका origin is linea aspera of femur. And दूसरा उसका nerve supply होता है tibial part of the common peroneal part of sciatic nerve. So short head of biceps is not a hamstring. Why? Because it arises from linea aspera of femur. Second, it is supplied by the common peroneal part of sciatic nerve. It is not tibial part. So it is not a hamstring. Fine. Fine. Great. Very nice. Bachcho, can you tell me what is this number 1? ये number 1 कौन है? Number 2 कौन है? Okay, just guess this. What is this number 1 and what is this number 2? Answer this. Very good, very good. Good. बहुत अच्छा preparation है आप सबका. ऐसे ही preparation करिए. हाँ, just keep your tempo like that. Okay, who's number 1? Who's number 2? Tell me. ना greater and lesser sciatic foramen नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वो ligaments पूछ रहा हूँ. Krish, I'm asking those ligaments. Ligaments पूछ रहा हूँ. हाँ, एक है sacrotuberous, like this is ये क्या था number? This is number 1 and this is number 2. एक है sacrotuberous ligament, दूसरा है sacrospinous ligament. Sacrospinous ligament. Fine. ये जो greater and lesser sciatic notches को foramen बनाते हैं, ये है greater sciatic foramen, ये है lesser sciatic foramen. Lesser sciatic foramen. Just tell me, this sacrotuberous ligament is a degenerated part of which muscle? Sacrotuberous ligament is a degenerated part of a muscle. एक muscle था which was beginning from the sacrum. वो यूं जा रहा था ischial tuberosity. It was going. It begins from the ischium. I mean, it begins from the hip bone. It goes to the sacrum. It goes to the ischial tuberosity, and it goes down. That's a long head of biceps femoris. Very good. So this sacrotuberous ligament is a degenerated part of long head of biceps femoris. ये याद रखना. And sacrospinous ligament is a degenerated part of coccygeus. Coccygeus muscle. We had a tail first. We had a tail, and which is a muscle in the tail? The coccygeus muscle. जैसे evolution हुआ, the tail went off, tail चला गया,
and the coccygeus muscle become degenerated to form the sacrospinous ligament. Fine. So the sacrospinous ligament is a degenerated part of coccygeus muscle, and the sacrotuberous ligament is a degenerated part of the long head of biceps femoris. Fine. Okay, fine. That's it. Okay, now I'll just come to this. I'll just come to the gluteal region. Gluteal region देखते हैं. Okay, a very important LAQ. बहुत ज़्यादा important LAQ है. Just try to understand. हाँ, articular disc of TM joint is a degenerated part of lateral pterygoid. Very good. याद आया? Yes, very good. ये बोल सकते हो tibial collateral ligament. चलो स्वप्न में you've answered this. So just tell me tibial collateral ligament is a degenerated part of which muscle? Tibial collateral ligament कहाँ पे होता है? On the medial aspect of the knee joint, and this tibial collateral ligament is a degenerated part of. Answer this. Anyone? Adductor magnus. ठीक है, adductor magnus. Tibial collateral ligament is a degenerated part of adductor magnus muscle, and fibular collateral ligament is a degenerated part of peroneus longus. Knee joint है, knee joint. Knee joint के दो ligaments हैं. One on the medial side is tibial collateral ligament. Lateral side पे होता है fibular collateral ligament. So tibial collateral ligament जो है, it's a degenerated part of adductor magnus. Fibular collateral ligament is a degenerated part of peroneus longus. बाद में sacrotuberous हो गया, sacrospinous हो गया. अभी स्वप्न में है just told the degenerated part, articular disc of TM joint is a degenerated part of lateral pterygoid. एक और बोलूं? I'll tell you one more. Oblique popliteal ligament. Oblique popliteal ligament is a degenerated part of Raviru. Important topics पढ़ना pelvis के. Important topics बोलना pelvis के. हाँ, oblique popliteal ligament is a degenerated part of. बच्चे लिखते हैं popliteus. It's not popliteus. No. Oblique popliteal ligament is a degenerated part of semimembranosus. Excellent, very good. So oblique popliteal ligament is a degenerated part of semimembranosus muscle. And कहाँ पे सुना है आपने oblique popliteal ligament? स्वर्णिम, ठीक है बच्चे, ठीक है. Oblique popliteal ligament कहाँ पे सुना है आपने? Oblique popliteal ligament. Where have you come across this oblique popliteal ligament? The popliteal surface of femur, the capsule of the knee joint, the oblique popliteal ligament, the popliteus muscle, the fascia covering the popliteus muscle. ये सब कहाँ पे सुना है आपने? This all you have seen in the floor of the popliteal fossa. Very good. The floor of the popliteal fossa. So floor of popliteal fossa में हमने सुना है oblique popliteal ligament. हाँ, so this oblique popliteal ligament is a degenerated part of semimembranosus muscle. बस ये याद रखना. हाँ, floor of popliteal fossa में था वो oblique popliteal ligament. So indirectly I've told you the floor of popliteal fossa, the popliteal surface of femur, the capsule of the knee joint, the oblique popliteal ligament, the popliteus muscle, and the fascia covering the popliteus muscle. ये है floor of popliteal fossa. Okay, fine. But I'll just draw one muscle here. Very important muscle है ये. हाँ, this muscle begins from the lateral aspect of the iliac crest. The lateral aspect of the iliac crest. The gluteal surface of ilium behind the posterior gluteal line. What is this line? एक मिनट. What is this line? ये क्या है? Inferior gluteal line. ये है anterior gluteal line and ये होगा posterior gluteal line. ये है posterior gluteal line. So inferior gluteal line, anterior posterior gluteal line. So this muscle arises from the gluteal surface of ilium behind the posterior gluteal line. It arises from the dorsal aspect of the iliac crest. It arises from the sacrum and the coccyx. It arises from the sacrotuberous ligament, and it also arises from a fascia. What is this muscle? ये muscle कौन है? Gluteus medius. ये gluteus medius है. So it arises from a fascia which covers the gluteus medius.
फेशा मतलब ग्लूटियस मीडियस के ऊपर एक फेशा होगा एंड उससे ओरिजिन होता है ग्लूटियस मैक्सिमस का. दिस इज द ग्लूटियस मैक्सिमस. Hi, I'm fine. So that's the gluteus maximus. Fine, that is known as gluteal aponeurosis. उसको बोलते हैं gluteal aponeurosis. बहुत ही important है बच्चों. So origin of gluteus maximus, number one, arises from the gluteal surface of ilium behind the posterior gluteal line, the dorsal aspect of the iliac crest, the sacrum and the coccyx, the sacrotuberous ligament, and the gluteal aponeurosis. What is gluteal aponeurosis? It's a fascia which covers the gluteus medius. Of this entire muscle, उसका insertion बोलिए. Where is the insertion of gluteus? हाँ, ductus venosus पे short note पूछा था. स्वर्णिम लिखा ना? हाँ, बोलता हूँ अब्दुल. अभी बोला ना मैंने, लोअर लिम्ब में जो है वो रेलेवेंट पॉइंट्स बोल रहा हूँ मैं. आई एम जस्ट टेलिंग द रेलेवेंट पॉइंट्स. हाँ. So tell me, where is the insertion of gluteus maximus? The gluteus maximus, a major part is inserted into this tract. What is this tract? Iliotibial tract. Very good. A major part is inserted into the iliotibial tract. A small part is inserted into the gluteal tuberosity of femur. Okay, gluteal tuberosity of femur. Major part, iliotibial tract. A small part is inserted on the gluteal tuberosity of femur. What is the main action of gluteus maximus? वेट बाद में डिस्कस करते हैं पेपर्स. जस्ट वेट, ये खत्म करो पहले. ओके, टेल मी व्हाट इज द मेन एक्शन ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस. अरे बच्चे एक मिनट. स्वर्णिम क्या है डक्टस वेनोसिस? सो पहले लिखना. सी ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स भी सवाल आते हैं, सो यू शुड बी एबल टू रिकलेक्ट. कहीं ना कहीं पे तो सुना है ना बच्चे. सो डक्टस वेनोसिस इज इन fetal life connecting the what is ductus venosus? It connects the left umbilical vein to the left branch of portal vein. Why is the ductus venosus formed? Because वो blood अगर liver में गया तो liver पूरा blood utilize करेगा, तो to bypass the liver वो ductus venosus होता है. It connects the left umbilical vein to the left branch of portal vein. After birth उसका बनता है ligamentum venosum. फिर ligamentum venosum का relation लिखना है कहाँ पे वो, between the caudate lobe and the IVC. ऐसे थोड़ा सी some questions are definitely going to be out of box where you really have to think and write. ठीक है, that is fine. कहीं ना कहीं तो सुना है. हाँ, if you are really attended all the lectures, if you have gone through the lectures, है ना, you should be able to recollect. हाँ, so don't get and ये बोला है सब मैंने lectures में. I've told you everything in the lectures. But be fresh for the exams. Exams के लिए you have to be very fresh. So automatically you recollect whatever you have done somewhere, है ना, ऐसे. That's fine. Okay, चलो. That's fine, Swanim. That's fine. See, exam is a learning process. मैं हमेशा बोलता हूँ, exams are learning process. Learn from the exams. Fine. Okay, चलो. Let's start. So that's gluteus maximus. What is the nerve supply of gluteus maximus? Anyone? Nerve supply of gluteus maximus? Anyone? What is the nerve supply of gluteus maximus? This you should know. बच्चों इसमें बहुत गलती होती है. Nerve supply of gluteus maximus is the inferior gluteal nerve. हाँ, inferior gluteal nerve. This should be there in your brain. Nerve supply of gluteus maximus is the inferior gluteal nerve. What is the main action of gluteus maximus? Superior and inferior नहीं है रे बच्चे. It's inferior gluteal nerve. Superior gluteal nerve supplies the gluteus medius, minimus and tensor fascia lata. The superior gluteal nerve जो है ना, वो 3 मसल्स को सप्लाई करती है, इसलिए वो MCQ में आता है. Gluteus medius, minimus and the tensor fascia lata. That's a superior gluteal nerve. Inferior gluteal nerve supplies the gluteus maximus. What is the main action of gluteus maximus? It is a chief extensor of the hip joint. ये hip joint को पीछे लेता है. It's a chief extensor at the hip joint. It's a lateral rotator of the hip joint. And third, it's an abductor. It's a very weak abductor. So the main action of gluteus maximus is extension at the hip joint. Second is lateral rotation. And third is abduction at the hip joint. Fine. Where do we give injections in the gluteus maximus? हाँ, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इंजेक्शन यहाँ पे देते हैं सुप्रोलैटरल क्वाड्रेंट. सुप्रोलैटरल क्वाड्रेंट में इंजेक्शंस देते हैं. इंजेक्शंस आर गिवन डीप इनसाइड, सो इंजेक्शंस आर गिवन इन द ग्लूटियस मीडियस.
ग्लूटियस मैक्सिमस को पियर्स करके अपन अंदर जाते हैं. सो इंजेक्शंस आर एक्चुअली गिवन इन द ग्लूटियस मीडियस मसल, बट इट इज गिवन इन द, हाँ, राइजिंग फ्रॉम अ सिटिंग पोजीशन इज एक्सटेंशन. बच्चे सिंचना, राइजिंग फ्रॉम अ सिटिंग पोजीशन इज एक्सटेंशन. राइट. ओके, इट्स एन एंटी ग्रेविटी मसल. ठीक है, फाइन है. ओके, ग्रेट ग्रेट. इफ यू गिव एन इंजेक्शन हियर, टेल मी हु इज डैमेज्ड. इंजेक्शन अगर यहां पे देते हैं, सो हु इज डैमेज्ड? यस, इंट्रोमीडियल क्वाड्रेंट में अगर इंजेक्शन दिया, सो हु इज डैमेज्ड? द थिकेस्ट नर्व इन द बॉडी. द थिकेस्ट नर्व इन द बॉडी जो ऐसे नीचे जाती है, हु इज दैट? शियाटिक नर्व. शियाटिक नर्व इज डैमेज्ड. अगर इंफ्रोमीडियल क्वाड्रेंट में इंजेक्शन दिया तो शियाटिक नर्व इज डैमेज्ड. हाँ, अगर सुप्रोमीडियल क्वाड्रेंट में इंजेक्शन दिया ना, यहाँ पे अगर इंजेक्शन देते हैं, सो हु इज डैमेज्ड इज द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व. अगर यहाँ पे इंजेक्शन देते हैं तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इज डैमेज. सो हु इज पैरालाइज? ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस एंड टेंसर फेशिया लैटा पैरालाइज होते हैं. ओके बच्चों, फाइन. वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लूटियस मैक्सिमस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू गेट एन एलएक्यू ऑन ग्लूटियस मैक्सिमस. अब ये है ग्लूटियस मीडियस, एंड व्हाट इज दिस मसल? ये कौन है? ग्लूटियस मिनिमस. ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस. टेल मी द इंसर्शन ऑफ ग्लूटियस मिनिमस. ये बोल सकते हो? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये वाइवास में भी पूछते हैं. दे ऑलवेज आस्क इन द वाइवास, वेयर इज द इंसर्शन ऑफ ग्लूटियस मीडियस एंड वेयर इज द इंसर्शन ऑफ ग्लूटियस मिनिमस? Anterior aspect, and this is lateral aspect of greater trochanter. Anterior aspect of greater trochanter पे, हाँ, anterior aspect of greater, outer lower पे कुछ नहीं है बच्चे. outer lower पे नहीं है कुछ. outer lower पे कुछ नहीं है. Okay. Okay. So where is the insertion of gluteus medius? On the lateral aspect of the greater trochanter. Gluteus minimus is inserted on the anterior aspect of greater trochanter. What is the main action of gluteus medius? Main action of gluteus medius. It is inserted on the lateral aspect of greater trochanter. The main action of gluteus medius. Anyone? I want a specific answer. A specific answer चाहिए. It's on the lateral aspect of the hip joint. Lateral aspect पे hip joint के lateral aspect पे होता है. So what is its action? हाँ, नहीं, gluteus medius का main action क्या है? Lateral rotation नहीं है रे बच्चे. It's an abductor of the hip joint. Abductor. Gluteus medius is at right angles. Just एक मिनट. Just listen. सिंगल मसल का एक्शन पूछ रहा हूं. ग्लूटियस मीडियस इज एट राइट एंगल्स टू द हिप जॉइंट. जैसे ये है, ये कौन है? डेल्टॉइड है ना. डेल्टॉइड इज एट राइट एंगल्स टू द शोल्डर जॉइंट. जब डेल्टॉइड कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या करता है? अबडक्शन. डेल्टॉइड इज एग्जैक्टली सिमिलर टू ग्लूटियस मीडियस. इट्स at right angles to the hip joint. So when it contracts, it does abduction. And gluteus minimus क्या करता है? Medial rotation. Gluteus minimus does medial rotation. So अगर मैं पूछता हूँ what is the action of medius? Abduction. Minimus, medial rotation. Up together, both acting together the gluteus medius and minimus does abduction and medial rotation, and they also stabilize the pelvis when one foot is off the ground. They stabilize the pelvis when one foot is off the ground. समझ में आ रहा है ये? They stabilize the pelvis when one foot is off the ground. So just tell me one thing. हाँ, एक मिनट. Now I'm standing on two legs. हाँ, just try to understand this. ये है ना clinical सवाल आता है, इसमें बहुत confuse होता है students को. I'm standing on two legs. हाँ, now I lift my right foot off the ground. मैंने right foot को ऊपर उठाया. When I lift my right foot off the ground, who's contracting? When I lift my right foot off the ground, the pelvis should fall on the right side. So which muscles are contracting? जब मैं right foot को ऊपर उठाता हूं, so which muscles are contracting? Answer this. Abdul, I'm standing on two legs. मैंने right foot को ऊपर उठाया,
तो which glute are contracting? I'm looking at the answers. Which side? Left side. Left side. अगर मैं राइट फुट को ऊपर उठाता हूं तो लेफ्ट ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो अगर मेरा लेफ्ट ग्लूटियस एंड मीडियस एंड मिनिमस आर पैरालाइज्ड, when I lift my right foot off the ground, the pelvis will fall on the right side. Pelvis will fall on the right side. The next step is normal. The next step is normal. Again, the pelvis falls on the right side. What is this gait known as? This gait is known as, yes, this gait is known as lurching gait. इसको बोलते हैं lurching gait. याद है ना ये lurching gait? अगर एक ग्लूटियस में एक साइड पैरालाइज हो गया तो दैट इज नोन एज lurching gait. अगर दोनों ग्लूटिया पैरालाइज हो गए, द पर्सन वॉक्स लाइक अ डक, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ waddling gait. इसे हम बोलते हैं waddling gait. And this test is known as Trendelenburg's. I mean, this sign is known as Trendelenburg's sign. Trendelenburg's sign. Fine. Okay. Perfect. हाँ, good. चलो, great. Very nice. Very nice, बच्चे. Very nice. हाँ, अब ये मसल्स बोल सकते हो क्या? Can you answer this muscles? Okay, I'll just put numbers here. If you can answer this, this is number 1, this is number 2, this is number 3, this is number 4, 5, 6, 7, 8. Chalo, answer this. Answer this. Trendelenburg says था ना? Yes. 1 कौन है बच्चे? 1 कौन है? अरे मोहित, वही बोला ना मैंने, Trendelenburg's टेस्ट वही है. Trendelenburg's टेस्ट साइन है, वो साइन. टेस्ट इज डिफरेंट. लर्चिंग गेट इज यूनिलैटरल बच्चे. चित्राली, लर्चिंग गेट इज यूनिलैटरल. अगर एक ग्लूटियस मीडियस मिनिमस पैरालाइज हो गया ना तो पेल्विस ड्रॉप्स ऑन वन साइड, नेक्स्ट स्टेप इज नॉर्मल, फिर वापस एक साइड, दैट इज लर्चिंग. अगर दोनों साइड पैरालाइज हो गया तो वैडलिंग गेट. एमबीबीएस के लिए, एमबीबीएस को एंटर होने वाले बच्चों के लिए नहीं है ये लेक्चर्स. दिस आर रिवीजन लेक्चर्स फॉर फर्स्ट ईयर एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स. ओके, अवेलेबल. फाइन. ओके, नंबर 1 इज ग्लूटियस मैक्सिमस. एक है मैक्सिमस, 2 है मीडियस, 3 है मिनिमस. इजी. 1 is maximus, 2nd is medius, 3rd is minimus, 4th कौन है? 4th. Number 4 कौन है? 4 is the key muscle of the gluteal region. This is what we call as piriformis. Key muscle of the gluteal region is piriformis. 5 कौन है? 5 is superior gemellus. Superior gemellus. This is obturator internus. This is inferior gemellus. This is Quadriceps femoris. Quadriceps femoris. हाँ, ये याद रखना. This you have to remember. And there is someone who's coming like this below the piriformis. What is this? हाँ, ऐसे आती है. Who's this? हाँ, yes. What's this? Key muscle of the upper limb pectoralis minor. अच्छा, ठीक है. That's fine. अब्दुल, जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है वो बोल रहा हूँ मैं. हाँ, वो बोल रहा हूँ. ए, व्हाट इज दिस थिक स्ट्रक्चर? ये येलो येलो कौन ड्रॉ किया मैंने? यस, यस अंशा. This is the sciatic nerve. Yes, that's a sciatic nerve. So just one thing you tell me, sciatic nerve is a branch of which plexus? Sacral plexus. Sciatic nerve का root value क्या है? L4, L5, S1, S2, S3. Sciatic nerve comes in the gluteal region. ये gluteal region में आती है. It comes below the piriformis. ये piriformis के नीचे आती है. Then the sciatic nerve lies on the अरे lateral cutaneous nerve is on this side. यहाँ पे है बच्चे. lateral cutaneous nerve यहाँ पे है बच्चे. ये आगे से आती है वो. lateral cutaneous nerve is a branch of lumbar plexus and this is a branch of sacral plexus, right? So sciatic nerve comes below the piriformis. The sciatic nerve is lying on which muscles? It lies on the superior gemellus, the obturator internus, the inferior gemellus, the quadratus femoris. और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ. Where are we? Where are we? Where are we? Where are we? एक मिनट. Hey, who's this? What's this muscle? What's this muscle? ये कौन है? So, yes, it's a scarf of sciatic nerve.
Yes. So sciatic nerve lies below the piriformis. Then the sciatic nerve is lying on what? The sciatic nerve is lying between the gluteal tuberosity and the greater trochanter. That's fine. The sciatic nerve is lying on, number one is the superior gemellus, obturator internus, inferior gemellus, quadratus femoris. फिर ये thigh में आ गई. What is this? Adductor magnus. Adductor magnus. And all this muscles forms the sciatic bed. The sciatic bed. ये MCQ में आता है. Sciatic bed is formed by all the following muscles except. क्या होगा एक्सेप्शन? क्या देंगे एक्सेप्शन के लिए? ये भी मैं बोलता हूं. What is the option that can be given as a what can be given as an option? Sciatic bed is formed by all the following muscles except. Yes. बोलो. You should be able to guess this. पायरिफॉर्मिस. वेरी गुड. पायरिफॉर्मिस ऑप्शन में होता है. पायरिफॉर्मिस बच्चे, बिकॉज पायरिफॉर्मिस शियाटिक बेड नहीं बनाता है. पायरिफॉर्मिस डज नॉट फॉर्म द शियाटिक बेड. अरे मेरे बच्चे, एडक्टर लॉन्गस इधर आता ही नहीं है. एडक्टर लॉन्गस आगे है. डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ. अदनान, अदनान, एडक्टर लॉन्गस इधर कहाँ आएगा? एडक्टर लॉन्गस आगे है ना बच्चे. मतलब ये साइड है, मीडियल कंपार्टमेंट में. एडक्टर लॉन्गस का सवाल ही नहीं है. So all the following forms the sciatic bed except उसमें एक ऑप्शन होता है pyriformis. Pyriformis does not form the sciatic bed. Fine. Sciatic bed is formed by superior gemellus, obturator internus, inferior gemellus, quadratus femoris and the adductor magnus. Perfect. Perfect. ठीक है. अब एक क्विक गो थ्रू करते हैं ना. एक क्विक गो थ्रू करते हैं. ये आ गई अपनी sciatic nerve. Sciatic nerve then divides into two branches. एक है tibial nerve and एक है common peroneal nerve. ठीक है. Now this common peroneal nerve winds around neck of the fibula. ठीक है ना. neck of fibula. ये क्लिनिकल सवाल आता है. क्लिनिकल सवाल आता है. पर्सन इज हिट ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग. फाइन. अ पर्सन इज हिट ऑन द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग. And then what does the person get? वो दिया होगा. So which is the nerve which is injured? Common peroneal nerve. ये याद रखना बच्चों. So common peroneal nerve winds around the neck of the fibula. Common peroneal nerve then divides into a deep peroneal nerve and a superficial पेरोनियल नर्व. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. डीप पेरोनियल नर्व एंड सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व. बस बच्चे ये याद रखना. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर यू. सो शियाटिक नर्व डिवाइड्स इनटू अ टिबियल एंड कॉमन पेरोनियल. कॉमन पेरोनियल नर्व गिव्स डीप एंड सुपरफिशियल पेरोनियल. जो डीप पेरोनियल नर्व है ना, ये कहाँ जाती है? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग. एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में गई. ये जाती है लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग. लैटरल कंपार्टमेंट में गई. एंड ये कहाँ जाती? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग. हाँ, यस यस, देयर इज गोइंग टू बी फुट डॉग. मैं बोलता हूँ, एक मिनट, आई टेल यू. नर्वी हेसिटेंस कौन है बच्चे? नर्वी हेसिटेंस इज डीप पेरोनियल नर्व. डीप पेरोनियल नर्व. हाँ, आई टेल यू दैट. वो मैं बोलता हूँ. नर्वी हेसिटेंस इज डीप पेरोनियल. Oh, that was a PG नीट का सवाल था ये. Nerve hesitans is. हाँ, मैं बोलता हूँ. Okay. So sciatic nerve divides into a tibial and common peroneal nerve. Just have a look at this. So this is the posterior compartment of the thigh. Posterior compartment of thigh में sciatic nerve है. Sciatic nerve divides into a tibial and common peroneal. Tibial सीधे नीचे जाती है in the posterior compartment of the leg. Common peroneal nerve winds around the neck of the fibula, divides into a superficial and deep peroneal. Okay. Tell me, what is the action of this muscles? Action of the muscles of the posterior compartment. Posterior compartment का action क्या है? Plantar flexion and inversion. Plantar flexion and inversion. Posterior compartment of leg का action क्या है? Muscles का action is plantar flexion and inversion. बस इतना याद रखना. Anterior compartment of leg का action क्या है? What is the action of this muscles? Dorsiflexion. Dorsiflexion is extension. ये dorsiflexion. And lateral compartment of leg का action क्या है? Eversion. Eversion. बस
This is going to answer everything for you. Everything. Fine. So now you tell me, posterior compartment के muscles का action क्या है? Plantar flexion. Plantar flexion. Anterior compartment का action क्या है? Dorsiflexion. And lateral compartment का action is eversion. So now you tell me, if there's an injury to the common peroneal nerve, अगर hit हुआ, a policeman gives a लाठी charge and वो common peroneal nerve damage हो गई, so common peroneal nerve damage हो गई तो superficial deep दोनों गए, so dorsiflexion is lost, so the person gets a foot drop हो गया, eversion is lost, so the foot is inverted, so it will be foot drop with inversion. प्रेग्नेंट नर्व पूछा होगा बच्चे स्वप्न में, प्रेग्नेंट नर्व रहेगा. Sciatic nerve is a pregnant nerve because उसके अंदर आर्टरी होती है. A nerve is said to be pregnant when there's an artery within the nerve. So examples of pregnant nerve is sciatic nerve. Sciatic nerve के अंदर एक आर्टरी होती है. वैसे this optic nerve के अंदर एक आर्टरी होती है, ophthalmic artery. So जो nerves जिसमें आर्टरी होती है, such nerves are said to be pregnant nerves. प्रेग्नेंट नर्व्स वो नर्व्स है जिसमें आर्टरी होती है. एग्जांपल इज ऑप्टिक नर्व एंड शियाटिक नर्व. ग्रेट, यू मस्ट हैव आंसर्ड वेरी वेल, दैट इज व्हाई ये सब पूछा. ठीक है, ओके बच्चों, ओके. सो फुट ड्रॉप इज क्लियर. सो यहाँ पे होगा फुट ड्रॉप एंड इन्वर्शन. टेल मी, ऐसे सवाल आया, a child is brought to the clinic. A child is brought to the clinic. The child is not able to stand on the tip of the toes. The child is not able to stand on the tip of the toes. क्या लगता है? Child is not able to stand on the tip of the toes. Now you tell me, standing on the tip of the toes, मतलब what is the action? See, you have to think like this. ऐसे सोचना पड़ता है. क्लिनिकल सवाल आता है तो when हाँ मैं मसल बोलता हूँ नाजिर मसल बोल रहा हूँ, बट मसल समझने से पहले ये समझ लो ना, तो मसल विल बी वेरी इजी, है ना. सो नाउ यू टेल मी, व्हेन वी आर स्टैंडिंग ऑन द टिप ऑफ द टोज, मतलब व्हाट इज दिस एक्शन? व्हाट इज दिस एक्शन? यस, व्हाट इज दैट एक्शन? बोलो, एक्शन क्या है? जस्ट ट्राई करो आप. यू आर स्टैंडिंग ऑन द टिप ऑफ योर टोज. वो है ना, when we were students, वो punishment था in the school. Teacher used to tell to stand on the tip of the toes and कान पकड़ने का ऐसे. So when you stand on the tip of the toes, what is that action? Plantar flexion है वो, plantar flexion है. हाँ, so and this plantar flexion is done by which muscles? Posterior compartment के muscles होते हैं, वो plantar flexion करते हैं. And this muscles are supplied by which nerve? Tibial nerve. अगर tibial nerve damage होता है, posterior compartment of the leg is paralyzed, a person cannot stand on the tip of the toes. समझ में आया ये? ऐसे analyze करना है आपको. This is how you should be able to analyze the questions. Okay. Understood now, all of you? So this is the type of clinical questions that you get. हाँ, so ये है ना फ्लो चार्ट याद रखना. It's very easy, बहुत easy है फ्लो चार्ट याद रखना. So now we come to the leg, posterior compartment of the leg. Nerves, you know, I'll just tell the muscles here. चलो बच्चों, can anyone tell me what are the muscles in the posterior compartment of the leg? Here we start. The first muscle, anyone? What is this muscle? ये number 1. ये कौन है? This is the gastrocnemius muscle. Gastrocnemius, हम gastrocnemius को निकाल देते हैं. We remove the gastrocnemius. What is this muscle? ये है gastrocnemius. What is this? Soleus is known as peripheral heart. ये explain why में आता है. हाँ, why is the soleus known as peripheral heart? Because soleus में बहुत बड़े बड़े veins होते हैं, venous sinuses जिसे हम बोलते हैं. So soleus has large number of venous sinuses, and when the soleus contracts, all the veins are drained out of the blood. Soleus is therefore known as a peripheral heart. हाँ, ये याद रखना. Soleus is known as peripheral heart. Why? Because soleus में venous sinuses होते हैं, बहुत बड़े बड़े veins होते हैं जिसे हम बोलते हैं venous sinuses, and when the soleus contracts, all the veins are drained out of the blood. Soleus is therefore known as the peripheral heart. Yes, first gear. Akshat has already told. Which is the other peripheral heart in the body?
Which is the other peripheral heart in the body? Ah, Swapnamay. Ah, Akshad. Very good. The second peripheral heart in the body are the pterygoids. The lateral and the medial pterygoids को भी peripheral heart बोलते हैं because this lateral and medial pterygoids are surrounded by a plexus जिसका नाम है pterygoid venous plexus. वो अपन HFN में देखेंगे. So this pterygoid venous plexus covers the lateral pterygoids, and when this pterygoids contract, all the veins are drained out of the blood. Therefore, pterygoids are also known as peripheral heart. So peripheral heart in the body, याद रखना, soleus and the pterygoids, lateral and medial pterygoids, दोनों pterygoids, common pterygoids. Fine, बच्चों, clear? Excellent. Okay, so we classify the posterior compartment of the leg into two sets of muscles. एक है superficial, दूसरा है deep muscle, right? So superficial muscles में the first muscle here, gastrocnemius soleus, and what is this muscle? Anyone? What is this muscle? जिसका छोटा सा belly है, लंबा सा tendon है. Very good, Jishan. Very good. Excellent. Very good to all of you. बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हो. Excellent. You all are answering very well. Good. I mean, ऐसे concepts होंगे ना. So when you actually go in second year, you'll enjoy everything. Yes, that's plantaris. This is plantaris. This plantaris is exactly similar to which muscle? A muscle जिसका छोटा सा belly and लंबा सा tendon है. Here. Palmaris longus. Excellent. Palmaris longus. Fine, Richa. Palmaris longus. This is plantaris, which is similar to palmaris longus. So gastrocnemius soleus and plantaris together एक common tendon बनाता है जिसका नाम है tendoachilles. यह है tendoachilles और tendocalcaneus. Tendoachilles or tendocalcaneus. Fine. And what is this muscle? This is the popliteus. This is the popliteus muscle. Popliteus muscle is an unlocker of the knee joint. That's a deep muscle. So superficial muscles कौन है? One, gastrocnemius soleus and plantaris. The deep muscles, one is popliteus. चलो, ये fast you tell me. ये है अपना tibia. This is the tibia. देखो ऐसे bones पढ़ना है. See, when you study for the theory, bones automatically हो जाते हैं. Tell me, what is this? What is this line? Anyone? What is that line? Huh. Very good. Middle 1/3 of the posterior surface of calcaneum. Excellent. Very good. Tell me, what is this line on the tibia? ये tibia के ऊपर का नाम बोलिए. हाँ, popliteus is an unlocker. वो लाइन बोलो. लाइन का नाम क्या है? Middle 1/3 of posterior surface. Yes, very good. ये है सोलियर लाइन ऑफ टिबिया. ये पूछते हैं, दिस इज आस्क्ड इन द वाइवा, ये लाइन का नाम क्या है? सोलियर लाइन ऑफ टिबिया. एंड दिस लाइन गिव्स ओरिजिन टू सोलियस. एंड व्हाट इज दिस मसल? व्हाट इज दिस मसल अबाउट द सोलियर लाइन? ये है popliteus. Where is the origin of popliteus? It begins from the lateral condyle of femur. Lateral condyle of femur से start होता है. That's the popliteus. This is the soleal line of tibia. अब क्या करता है? टिबिया को दो हाफ में डिवाइड करता है, फिबुला को दो हाफ में डिवाइड करता है. व्हाट इज दिस मसल? ये मसल कौन है? ये है tibialis posterior. What is this muscle? This muscle is the flexor digitorum longus, and this muscle flexor hallucis longus. देखो ये भी मैं बोलता हूं. एक मिनट, just listen. Posterior compartment muscles are flexors, plantar flexor. So one will go to the great toe. What is that? Flexor hallucis longus. One will go to the digits. ये क्या होगा? Flexor digitorum longus. Right. Now just tell me, flexor hallucis longus should begin from which bone? Flexor hallucis longus has to go to the great toe. Great toe की तरफ जाना है उसको. So it should begin from which bone? Tibia. Medial aspect पे है ना. Ideally, it should begin from tibia. And flexor digitorum longus has to go to the digits. तो वो कहाँ से arise होना चाहिए? Fibula से. But ऐसे नहीं होता.
मसल्स इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग दे अराइज फ्रॉम रॉन्ग बोन्स, वो गलत बोन से अराइज होते हैं. सो फ्लेक्सर हाल्यूसिस लॉन्गस जो टिबिया से अराइज होना था, इट अराइजेस फ्रॉम द फिबुला, एंड फ्लेक्सर डिजिटम लॉन्गस अराइजेस फ्रॉम द टिबिया. ये याद रखना. सो जब ये दोनों मसल्स सोल में जाते हैं तो दे क्रॉस. दे क्रॉस इन द सोल. So two muscles cross in the sole. Which two? Flexor hallucis longus, flexor digitorum longus. Simple है ना? Flexor hallucis longus fibula से आया, सोल में गया. It has to go towards the great toe. Digitorum has to go towards the digits. So two muscles cross in the sole. In which layer of the sole? बोल सकते हो? ये कौन से layer of the sole में cross करते हैं? Answer. Which layer of the sole do they cross? फ्लेक्सर हाल्यूसिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटम लॉन्गस, ये कौन से लेयर ऑफ द सोल में मिलते हैं अपने को? दे बोथ क्रॉस इन द सेकेंड लेयर ऑफ द सोल. ये याद रखना. सोल ऑफ द फुट आई टेल यू. नहीं, अंडर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम नहीं, दे गो बिलो द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. रविरी, it goes below the flexor retinaculum but it crosses in the second layer of the sole. ये याद रखना. So automatically layers of sole also you know. So second layer of sole में दो muscles मिलेंगे, एक है flexor hallucis longus, दूसरा होगा flexor digitorum longus, and they are going to cross. Why do they cross? Because they arise from wrong bones. Am I clear to all of you? Fine. So this completes the posterior compartment of the leg. बहुत easy है. Leg ऐसे LAQs वगैरह में नहीं आता है, SAQs में नहीं आता है. But you have to know this muscles because ये practical point of view से बहुत ज़्यादा important है. Okay, fine. Now coming to the anterior compartment. Anterior compartment of the leg के muscles कौन है? One is tibialis anterior, tibialis anterior. दूसरा है extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, and peroneus tertius. Peroneus tertius. बस ये याद रखना. टिबियालिस एंटीरियर जैसे टिबियालिस पोस्टीरियर है वैसे ही टिबियालिस एंटीरियर है. हाँ रीचा, वेरी गुड. टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हाल्यूसिस लॉन्गस गोज टू द ग्रेट टो, एक्सटेंसर डिजिटम लॉन्गस गोज टू द डिजिट्स, एंड एक मसल है पेरोनियस टर्शियस. व्हाट इज दिस? एंटीरियर कंपार्टमेंट. एंड लैटरल कंपार्टमेंट के मसल्स कौन है? पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस. दैट्स इन द लैटरल कंपार्टमेंट. बस मसल्स याद रखना. Anterior, posterior, lateral compartment में what is important is the nerve supply. Very important. That's the nerve supply. बच्चों nerve supply याद रखना. Fine. So that's about the muscles. Now just tell me the layers of the sole. We'll start with the layers of the sole. Before coming to the layers of the sole, if anyone can tell me, see, can just identify this bone. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, 6, 7. हाँ, ये आइडेंटिफाई कर लो बोन्स. एक्सरेज में पूछते हैं, so you should be able to identify the bones. हाँ अक्षर, फाइन फाइन. One is calcaneum, 2 है talus. One is calcaneum, 2 is talus. I want 3. Number 3 कौन है? Number 4 कौन है? Any guesses? 1 is calcaneum, 2 talus है. 3 और 4 कौन है? हाँ बोलो. आई एम लुकिंग एट द आंसर्स. नंबर 3 कौन है बच्चों? देखो, सी व्हेन यू आइडेंटिफाई ना, पहले मीडियल एंड लैटरल पहले समझ लो. बॉडी में भी व्हेन यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन, जब एग्जामिनर पूछता है, पहले गेट ओरिएंटेड टू द लिम्ब. लैटरल कौन सा है, मीडियल कौन सा है, एंड देन यू आंसर. सो नंबर 3 कौन है बच्चा? 3 है क्यूबॉइड. वेरी गुड. 3 इज क्यूबॉइड. हाँ 3 है क्यूबॉइड. ये लैटरल है ना बच्चा, ये लैटरल है, ये मीडियल है ना, मीडियल है. ओह 4 कौन है? 4 नाविकुलर. वेरी गुड. 4 इज नाविकुलर बोन, नाविकुलर. ये 3 कौन है? क्यूनिफॉर्म्स. ये 3 कौन है? क्यूनिफॉर्म बोन्स. सो कैल्केनियम, टैलस, दिस इज navicular ऑन द मीडियल साइड. बोट शेप्ड होता है ना ये. navicular कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपन? बोट शेप्ड. So boat shaped bone is navicular. This is going to be the cuboid. These 3 are cuneiforms. These are the metatarsal bones. Fine. Just tell me one thing. You can see a groove here. एक मिनट, I'll just clear this. You can see a groove here. ये groove दिखता है, ये groove.
ये ग्रूव किसके लिए है? हु फॉर्म्स दिस ग्रूव? ये ग्रूव कौन बनाता है? मतलब ग्रूव बिलो द क्यूबॉइड इज फॉर विच बोन? हाय ऋत्विक, groove below the cuboid is for which bone? I am groove below the cuboid is for which muscle? There's a muscle which begins from the lateral side. देखो muscle ऐसे आता है, ऐसे आता है, lateral side पे आता है, यहाँ पे turn होता है, and then the muscle goes like this, like this, like this, passes below the here, and gets inserted here. The muscle comes like this. One moment, the muscle comes like this, it goes here, then it goes here and gets inserted here. ये कौन है muscle? हाँ, पेरोनियस ब्रेविस नहीं है बच्चा, पेरोनियस ब्रेविस नहीं है, इट्स पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस। अरे बच्चे, पेरोनियस ब्रेविस इज अ स्मॉल मसल, नाम ही है ब्रेविस। पेरोनियस ब्रेविस का इंसर्शन इज दिस फिफ्थ मेटाटार्सल बोन, छोटा सा मसल है, दिस इज पेरोनियस लॉन्गस। सो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, ये नीट पीजी का भी सवाल था, इट कम्स इन फॉर फर्स्ट ईयर आल्सो, ग्रूव बिलो द क्यूबॉइड इज फॉर व्हिच टेंडन? योर आंसर इज पेरोनियस longus. याद रखना। That's fine, that's fine. It's okay बच्चे, I'm there to tell you no. It's okay. कुछ चीजें ना revisions में समझते हैं. And there are certain things which have to be told only in revisions, when you know everything and where you can correlate everything, right? So the groove below the cuboid is for what? Peroneus longus. Now when you have the bone है ना, bone जब देखोगे ना तो cuboid के नीचे groove जरूर देखना. And then you remember this groove is for which muscle? Peroneus longus. If you answer this, examiner is very happy. Peroneus brevis winds around the lateral malleolus. And who winds around the medial malleolus? Which is the tendon which winds around the medial malleolus? Anyone? ये medial malleolus है, हाँ? There's a tendon which winds around the medial malleolus. ये कौन है tendon? ये medial malleolus है, which is this tendon which winds around the medial malleolus. Anyone? Yo. Who's this? Which is the tendon which winds around the medial malleolus? No, Swapnamai, no. The tendon which winds around the medial malleolus is tibialis posterior. याद रखना. This is tibialis posterior. Tendon which winds around the medial malleolus is tibialis posterior. Always. अगर वाइवा में भी पूछते हैं, वाइवा में क्या करते पता है? एग्जामिनर बस ये पूछते हैं, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट सर्चिंग बोलता है डोंट सर्च एनीथिंग, बस ये देख के आइडेंटिफाई करना है. सो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप देखोगे दिस टेंडन इज वाइंडिंग अराउंड द मीडियल मैल्युलस, सो दिस हैज टू बी tibialis posterior. It has to be tibialis posterior. So in other words, the tendon which winds around the medial malleolus is tibialis posterior. Fine. The muscle which winds around the lateral malleolus is peroneus brevis. Muscle which winds around the lateral malleolus is peroneus brevis. Can you answer this? What is this muscle? देखो ये anterior compartment है. What is this number 1? What is this number 2? And ये जो कट किया है यहाँ पे ऐसे कट किया, this is number 3, and there is one which goes here. ये draw नहीं किया, this is number 4. These are the muscles of anterior compartment. So one कौन है? Tibialis anterior. 2 कौन है? Extensor hallucis longus. 3 कौन है? Extensor digitorum longus. And 4 कौन है? Peroneus tertius. Peroneus tertius. Fine. Okay, I hope this is clear till here. So now we come to the layers of the soul. Layers of the soul. एक short में बोलता हूँ layers of the soul. हाँ, fine. Okay, we come to the layers of the soul. Now, this is the great toe. कैसे याद रखोगे इसको? This is the great toe, and that's the little finger. Great toe and little finger. कितने layers, कितने muscles होते हैं? 4. I mean, कितने layers होते हैं? 4 layers होते हैं. 4 layers in the sole. बस the way I'm telling you इतना याद रखो. Sole of the foot doesn't come as a short note. कुछ नहीं आता है. Sole of the foot comes in MCQs. MCQs में आता है which muscle is present in which layer. बस ये आता है. So out of this, the first layer and the third layer is intrinsic.
इंट्रिंसिक मतलब क्या, छोटे छोटे मसल्स लाइक ये इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड थे ना, लंब्रिकल्स, इंट्राशाई, सो दीज आर स्मॉल मसल्स, इंट्रिंसिक मसल्स. So all the intrinsic muscles will end with what? Brevis. छोटे छोटे मसल्स है ना, तो brevis. कैसे याद रखोगे? Put an abductor here. See, I'll just write this down. Put an abductor here, and put a flexor in between. ऐसे याद रखना है आपको. एक abductor बीच में flexor. इसका नाम क्या होगा? Abductor hallucis brevis. ग्रेट तो है ना, abductor hallucis brevis. इसका नाम क्या होगा? Abductor digiti minimi brevis. हाँ, this is a mnemonic. So abductor hallucis brevis, abductor digiti minimi brevis, and ये क्या होगा बीच में? This is the flexor digitorum brevis. Flexor digitorum brevis. So कैसे याद रखोगे? abductor बीच में flexor. छोटे छोटे मसल्स हैं. abductor hallucis, great toe is hallux, hallucis brevis, abductor digiti minimi brevis, flexor digitorum brevis. First layer. हाँ, fab. अब थर्ड लेयर में देखिए, थर्ड लेयर इज अगेन इंट्रिंसिक. ये ना फ्लेक्सस को दोनों साइड्स पे लेके आइए, पुट अ फ्लेक्सर हियर. हाँ, put a flexor here. See, very easy. Put a flexor here, and put an adductor here. Adductor. इसका नाम क्या होगा? Flexor hallucis brevis. इसका नाम होगा Flexor digiti minimi brevis. And this is the adductor hallucis. जैसे adductor pollicis था ना अपना, adductor pollicis, वैसे ये adductor hallucis. हाँ, little finger है बच्चे, little finger है ये. This is little finger. This is little finger. ये ग्रेट टो है, वो लिटिल फिंगर है. हाय शंभो, फाइन. वो लिटिल फिंगर है. लिटिल फिंगर का नाम क्या है? डिजिटी मिनिमी. ग्रेट टोज हाल्यूसिस, राइट. सो एब्डक्टर बीच में फ्लेक्सर, थर्ड लेयर में फ्लेक्सर बीच में एडक्टर. खत्म. फर्स्ट एंड थर्ड लेयर्स आर ओवर. इंट्रिंसिक मसल, छोटे छोटे मसल्स. अब सेकेंड एंड फोर्थ में द मसल्स come from the leg. Mixed है ये, mixed, intrinsic and extrinsic. हाँ, intrinsic and extrinsic, mixed है ये. So now I told you there are two muscles which comes from the leg, the muscles which arise from wrong bones. The muscles come in the sole, they cross. कौन है? They cross. Yo, this is flexor hallucis longus, flexor digitorum longus. ये cross होते हैं. Flexor digitorum longus is similar to flexor digitorum profundus. याद है, प्रोफंडस से वर्म लाइक मसल्स अराइज, नाम है लंब्राइकल्स. फाइन. एंड एक और मसल है जिसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरम एक्सेसोरियस. आई एम जस्ट टेलिंग यू डायरेक्टली. हाँ, फ्लेक्सर डिजिटोरम एक्सेसोरियस. बस बच्चे इतना याद रखिए, जस्ट रिमेंबर दिस मच. इन द सेकेंड लेयर ऑफ सोल वी हैव फ्लेक्सर hallucis longus, flexor digitorum longus, flexor digitorum accessorius, and lumbricals. Okay, and the last layer of the sole. Last layer. हाँ, Akshat, fine. Flexor digitorum accessorius, quadriceps plantae. And the last layer contains tibialis posterior, peroneus longus, and intraossei. बस ये है tibialis posterior, peroneus longus, and intraossei. This is the layers of sole. This is the most difficult part to understand, but इतना याद रखना है आपको. हाँ, don't go into details of this. Fine है. So which muscles are present in which layers of the sole, वो याद रखना है आपको. ठीक है बच्चों. So this is what is asked in the lower limb. फिर इसके बाद, okay, just have a look at this. See, this is the first layer of the sole. Huh? I'm just showing you the layers. एक बार ये देख लो. So this is the first layer of the sole. This is one muscle. This is one.
दिस इज 2 एंड दिस इज 3. सो ये ग्रेड 2 है. सो ये मसल का नाम क्या है? एब्डक्टर हाल्यूसिस ब्रेविस. ये मसल का नाम है एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस एंड ये है फ्लेक्सर डिजिटरम ब्रेविस. फ्लेक्सर डिजिटरम ब्रेविस. अब थर्ड लेयर में आइए. थर्ड लेयर में दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. थर्ड लेयर में ये है फ्लेक्सर हाल्यूसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस एंड दिस इज द एडक्टर हाल्यूसिस. जैसे एडक्टर पॉलिसिस था ना, वैसे एडक्टर हाल्यूसिस है. स्वप्न में वेट रुकना, खत्म नहीं हुआ. नाउ दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ द सोल. सेकेंड लेयर ऑफ द सोल में दिस इज फ्लेक्सर हाल्यूसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटरम लॉन्गस. व्हाट आर दीज मसल्स? लुक एट दिस. व्हाट आर दीज वर्म लाइक मसल्स? देख रहे हो? दिस वर्म लाइक मसल्स आर lumbricals. ये these are the lumbricals and this is the flexor digitorum accessorius. Flexor digitorum accessorius. Arches of the foot is very important. बहुत important है वो. Okay. And the last layer is tibialis posterior, peroneus longus, and these are the introsci. Right. Khatam. Understood? Okay, now just try to understand this. So, ये है the same thing I've told you. अब है ना बच्चे, hip joint is a very important LAQ. Hip joint पे you have to first write the type of the joint, then the bones taking part in the formation of joint, then the ligaments. Capsular ligament है, then iliofemoral, which is the strongest ligament of the hip joint, iliofemoral ligament or the ligament of Bigelow. फिर ischiofemoral, pubofemoral, फिर ligament of head of femur and the acetabular labrum. ठीक है, ये ligaments हो गए. Then you have to write the relations of the hip joint. Relations वही है, anterior, posterior, medial. हाँ, जो हमने compartments of leg पढ़े हैं वो relations. Then movements, flexion, extension, adduction, abduction, medial rotation, lateral rotation, and then finally you have to write about the clinical thing, clinical application. Knee joint comes as an LAQ. Explain the knee joint under the following heads. तो उसमें है ना bones taking part, then various ligaments आपको लिखना है. उसमें menisci short node भी आता है. menisci, हाँ, medial meniscus, lateral meniscus, cruciate ligaments आते हैं. cruciate ligaments. हाँ, just tell me what is the action of anterior cruciate ligament? Can anyone tell me action of anterior cruciate ligament? बस ये बोल दो. I'm not going to details of that. What is the action of anterior cruciate ligament? Yes. Action of anterior cruciate ligament. It prevents the anterior displacement of tibia on the femur. Then main action of ACL क्या है? It prevents the anterior displacement of tibia on the femur. अगर ACL डैमेज होता है ना तो टीबिया डिस्प्लेसेस एंटीरियरली. टीबिया ऐसे आगे चला जाता है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एंटीरियर ड्रॉवर साइन. एंटीरियर ड्रॉवर साइन. हाँ. सो ACL क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीबिया. अगर ACL डैमेज होता है तो टीबिया स्लिप्स एंटीरियरली. यस. So this is known as anterior drawer sign. Posterior cruciate ligaments prevents the posterior displacement of tibia. अगर PCL डैमेज होता है तो it is known as a posterior drawer sign. हाँ, ये ACL PCL के बारे में लिखना. फिर आपको रिलेशंस पता है, you know the muscles, तो ऑटोमेटिक रिलेशंस आ जाते हैं and then you can write about the movements of the joint. हाँ, see, कोई भी joints के लिए muscles, you know the muscles now, you know the action of the muscles, so automatically वो हो जाता है. Why is medial collateral ligament more prone to injury? हाँ, very good. स्वप्न में MCL is more prone to injury. ये कोई बोल सकता है? Why is medial collateral ligament? ये explain why में आता है. Medial collateral ligament or the medial collateral ligament नहीं, medial meniscus is more prone to injury. Medial meniscus. बच्चों, answer this. Medial meniscus is more prone to injury. Why? This comes as explain why. Because ये जो medial meniscus है ना, this medial meniscus is very firmly attached. It is very closely attached to the capsule of the knee joint.
ये कैप्सूल को अटैच रहती है. It is firmly attached to the capsule of the knee joint. Secondly, it is also closely attached to the tibial collateral ligament. Tibial collateral ligament. So ये जो medial meniscus है ना, it is firmly attached to the capsule of the knee joint. It is also firmly attached to the tibial collateral ligament. So whenever there's a forceful rotation, ऐसे rotation होता है ना, this medial meniscus gets crushed. ये क्रश हो जाता है. लैटरल मेनिस्कस इज नेवर इंजर्ड. व्हाई? बच्चों, लैटरल मेनिस्कस कभी इंजरी नहीं होती है. सपोज ये लैटरल मेनिस्कस है, दिस लैटरल मेनिस्कस इज नॉट अटैच्ड टू द कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट. लैटरल मेनिस्कस इज नॉट अटैच्ड टू द कैप्सूल बिकॉज बीच में एक मसल होता है. व्हाट इज दिस मसल? Lateral meniscus is prevented from injury by, answer this, ब्लड वेसल्स बोलता हूँ बच्चे, ब्लड वेसल्स बोलता हूँ. यस बच्चों बोलो. हु इज दिस ग्रीन थिंग? ये ग्रीन थिंग कौन है? मतलब medial meniscus is firmly attached to the capsule of the knee joint, whereas lateral meniscus is separated from the capsule by, very good Vaibhav, very good, it is separated by popliteus. Yes, SS Chaudhary, very good. अक्षत राय, रिचा. तो ये जो पॉप्लीटस है ना, ये प्रिवेंट करता है लैटरल मेनिस्कस को, सेपरेट करता है फ्रॉम द कैप्सूल. ये याद रखना बच्चे, ये दिस कैन कम एज एक्सप्लेन व्हाई. याद रखना, ठीक है. ओके, सो दैट्स अबाउट दिस. ये आर्चेस है ना, आर्चेस ऑफ द फुट में बोलता हूँ. इफ यू कैन क्विकली टेल मी फीमोरल आर्टरी, एक आर्टरी बोलता हूँ फटाफट. फीमोरल आर्टरी pierces the adductor magnus, continues as what? Popliteal artery. Popliteal artery divides into a posterior tibial and anterior tibial. Okay. So femoral artery continues as popliteal artery. Where? ये बोल सकते हो फास्ट. यू टेल मी, आई एम फिनिशिंग दिस. द femoral artery continues as popliteal artery after. After. Richa, come on answer. After popliteus नहीं. अच्छा, वो popliteus previous answer. The femoral artery continues as popliteal artery after piercing the adductor magnus. After piercing the adductor magnus at the opening, जिसका नाम है hiatus magnus, right? So femoral artery बन गई popliteal artery after piercing the adductor magnus. वो ओपनिंग का नाम है हाइटस मैग्नस. एंड ये कहाँ पे होता है? अच्छा, लाइट कलर यूज करूं, ठीक है बच्चे, ठीक है. ओम, ठीक है. दिस इज इन द एडक्टर कैनाल. ये एडक्टर कैनाल में है. हाँ, ये एडक्टर कैनाल में है. फाइन, दिस इज इन द एडक्टर कैनाल. सो दिस इज द फीमोरल आर्टरी. Femoral artery now continues as popliteal artery in the adductor canal. Popliteal artery divides at the lower border of popliteus into a posterior tibial and anterior tibial. अब जो anterior tibial है वो कहाँ जाती है? Anterior tibial goes to the anterior compartment of the leg. Posterior tibial goes to the posterior compartment of the leg. Posterior compartment of leg. ये anterior compartment में गई. This posterior tibial gives a branch. इसका नाम है peroneal artery, which goes to the lateral compartment. खत्म. So femoral artery continues as popliteal artery, divides into anterior posterior tibial, and then this is it. Fine. Just in short, I'll tell you. Just name the muscles. एक मिनट, किधर गया? Name the muscles involved in this. Medial longitudinal arch कौन कौन बनाता है? The medial longitudinal arch is formed by the calcaneum, the talus, the navicular, and the three cuneiform bones. Calcaneum, talus, navicular, the three cuneiform bones, and the three metatarsal bones. So medial longitudinal arch is formed by the calcaneum, talus, navicular, three cuneiforms, and the three metatarsal bones. ये बनता है medial longitudinal arch. The lateral longitudinal arch is formed by the calcaneum, the cuboid, the fourth and fifth metatarsals. Calcaneum, cuboid, the fourth and fifth metatarsals.
Then arches में you have to write about the bones. First is the bones which takes part in the formation of the arch. Second is the ends. Anterior end is formed by the heads of the metatarsals. Posterior end is formed by the calcaneum. Ends. Then you write about the summit. Summit is the highest point of the arch. So कोई भी arch explain करते हो तो bones taking part in the formation of the arch. Second is the ends. Third is the summit. And fourth is the main joint of the arch. Main joint. So medial longitudinal arch का main joint क्या है? Talocalcaneonavicular. And lateral का calcaneocuboid. ठीक है? So ये points लिखना है. And then you have to write about the factors maintaining the stability of the arches. Factors maintaining the stability of the arches. One is the shape of the bones. दूसरे होते हैं ligaments जिसे हम बोलते हैं intersegmental tires ये ligaments है. Third are the tie beams जो दो ends को connect करते हैं, they are the tie beams. And the fourth is the sling जो ऊपर से आते हैं. So factors maintaining the stability of the arches, one is the shape of the bones, second is the intersegmental tires. Intersegmental tires are the ligaments. Third is the tie beams जो दो ends को tie करते हैं, and four is the sling. तो ये explain करने के बाद then you write what is a high arch foot known as. Answer this. And high arch foot is known as pes cavus. If the arches are exaggerated इसको बोलते हैं pes cavus. अगर arches flat हो जाते हैं flat, pes planus. If a person is walking on the toes, so this is known as talus equinus. If the person is walking on the heel, this is known as talus calcaneus. If the person is walking on the inner border, this is valgus. If a person is walking on the outer border, this is varus deformity. Valgus and varus. What is the most commonest defect? Talus equinovarus. ठीक है? अगर टोस पे चलता है तो talus equinus, heel पे चलता है talus calcaneus, अगर आउटर बॉर्डर ऑफ द फुट पे चलता है तो talus varus, अगर इनर बॉर्डर ऑफ द फुट पे चलता है तो talus valgus. What is the most commonest deformity? Talus equinovarus. Fine. Then you have to कुछ है ना, you have to know about the venous drainage. Venous drainage में great saphenous vein के बारे में लिखना है, short saphenous vein के बारे में लिखना है. Then you have to write about the perforating veins. Perforating vein is one is in the region of adductor canal. Second is just below the knee. And leg में medial side पे 3 perforators होते हैं, lateral side पे 1 perforator होता है. Medial side पे 3, lateral side पे 1. So what do they connect? You have to write. And then you have to write about varicose veins and उसके complications. ठीक है? That is venous drainage is an LAQ, वो बहुत important है. Fine. Now you tell me, these are the inguinal group of lymph nodes. This is the horizontal group. This is the vertical group. This is upper medial. This is upper lateral, and this is vertical group. Can anyone tell me what is the upper medial group drain? चलो, ये बहुत ज़्यादा important है. ये बहुत ज़्यादा important है. हाँ, very good. वो you can read that. Hunters वगैरह perforators एक बार पढ़ लो. Upper medial group क्या drain करता है? This is extremely important. The upper medial group drains the anterior abdominal wall below the umbilicus. It drains the skin and fascia of the perineum except the glans penis and the glans clitoris that drains into the deep inguinal lymph nodes. It drains the anal canal below the dentate line. बच्चों बहुत important है. Anal canal below the dentate line drains into superficial inguinal lymph nodes. It drains the vagina below the hymen. It drains the cornu of the uterus. Cornu of the uterus drains into superficial inguinal. याद है ना? So upper medial group में क्या drain होता है? Anterior abdominal wall below the umbilicus. Second, skin and fascia of the perineum, including the external genitals, except the glans penis and the glans clitoris. Anal canal below the dentate line. Vagina below the hymen. The superolateral angle, the cornu of the uterus. इतना drain करता है. Fine. Glans nahi, except the glans. The glans penis, glans clitoris drains into clocket, lymph node of clocket. Upper lateral group drains the back below the umbilicus, the gluteal region, and the lateral aspect of the thigh.
back below the umbilicus, the gluteal region, and the lateral aspect of thigh. And vertical drains the lower limb. Vertical group drains the lower limb. Fine. तो ये याद रखना, this comes in MCQs. ये MCQs में आता है. चलो, can anyone answer this? बस एक 5 मिनट है, 5 मिनट. I'm finishing this 5 minutes. अरे बच्चे, आई एम सुपर 30 बोलता हूँ मैं. आई एम टेलिंग यू. चलो आंसर दिस. अ 40 इयर्स, एक क्लिनिकल सवाल दिया मैंने जस्ट फॉर योर ओरिएंटेशन. ओके, कम ऑन. अ 40 years old mill worker complains of severe pain in both legs, mostly in the night. Recently developed a non-healing ulcer in front of the medial malleolus. There were dilated and tortuous veins in both the lower limb. Name the clinical condition. Answer this. Varicose veins. Yes, varicose veins. हाँ, नेट क्रैकर बोलता हूँ. Hi, Mohammed Sadiq. Thank you. Varicose veins. Cause of above condition. एक तो valves damage होते हैं. The main valves are damaged or the valves in the perforating veins are damaged. ठीक है ना? So that's the reason for varicose veins. Damage to the valves. One more for you. Answer. A 25 years old male suffered from knee injury while playing a football. He was unable to walk properly. He complains of excessive anterior displacement of leg while climbing down the stairs. Anterior drawer sign was positive. Anterior cruciate ligament rupture हो गया. So what is this clinical sign? Hey, यही है anterior drawer sign. Sometimes है ना वो answer है ना question में ही होता है. Sometimes the answer is there in the question only. If you can understand that, no. ये देखो, anterior drawer sign. It's an injury to the anterior cruciate ligament. Name the clinical sign. That is anterior drawer sign. And then attachment of ACL and PCL याद रखना है. ठीक है. So this is how the clinical questions are. These are the LAQs: femoral triangle, popliteal fossa, hip joint, knee joint, ankle joint, venous drainage, arches, gluteus maximus, sciatic nerve. These are the LAQs. सुपर 30 चाहिए ना, इतना ही है लोअर लिम्ब में. एंड SAQs, ये आते हैं SAQs. हाँ, लॉकिंग अनलॉकिंग भी है, बाकी सब हमने देखा है. एक इन्वर्शन इवर्शन है. हाँ, इन्वर्शन इवर्शन पता है ना आपको. इन्वर्शन में द मीडियल बॉर्डर गोज अप, द सोल फेसेस इनवर्ड्स. इवर्शन में इट फेसेस आउटवर्ड्स. देन हु डज इन्वर्शन एंड इवर्शन, वो मसल्स के नाम लिखने हैं आपको. दैट इज इट. एंड द जॉइंट इज सब टालर एंड मिड टार्सल. बच्चों एक चीज याद रखना, एंकल जॉइंट पे ओनली डॉर्सिफ्लेक्शन प्लांटाफ्लेक्शन टेक्स प्लेस. एंकल जॉइंट पे डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटाफ्लेक्शन होता है. इन्वर्शन एंड इवर्शन एंकल जॉइंट पे नहीं होता. Inversion and eversion ankle joint पे नहीं होता. It occurs at the subtalar and the mid-tarsal joint. Subtalar and mid-tarsal joint. So अपना में ankle joint में क्या है? Tibia fibula, हाँ, and the inferior tibiofibular ligament, ये ऊपर होता है. The talus is the lower part. Tibia fibula, tibiofibular ligament fits into the talus. That's the ankle joint. It's a hinge type of synovial joint. फिर मीडियल एस्पेक्ट पे डेल्टॉइड लिगामेंट है. डेल्टॉइड लिगामेंट के पार्ट्स लिखना है. लैटरल साइड पे कैल्किनियोफिबुलर लिगामेंट है. एंड देन मूवमेंट्स लिखना है. हाँ, डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटाफ्लेक्शन एंड द मसल्स कॉजिंग द मूवमेंट्स. दैट्स इट. अच्छा, नीट क्रैकर. सी, वो जो कैल्कराइन सल्कस है ना, इट ग्रोज इन द एक्सिस ऑफ अ लोब. इट ग्रोज इन द एक्सिस ऑफ अ लोब, इसीलिए उसको एक्शियल सल्कस में इंक्लूड करते हैं. Second, the calcarine sulcus forms an elevation in the floor of the lateral ventricle, जिसे हम बोलते हैं calcar avis. So calcarine sulcus forms an elevation in the floor of the lateral ventricle, that is calcar avis. So it is an example of complete sulcus because it forms an elevation in the floor of lateral ventricle. And second, it grows in the axis of the occipital lobe, इसीलिए उसको include करते हैं axial sulcus में. Okay. So calcarine sulcus is an example of two sulcus. ठीक है, knit cracker. I hope students you've enjoyed the lecture. It was a quick revision, a quick go through. Revision के लिए read things and then you come. It will be easy for you to understand. Right? Thank you so much, my dear children. Thank you and have a pleasant night. Thank you. Any doubts you have, you ask. Housemaids है ना बच्चे, हाउस कैसे याद रखोगे अक्षत? हाउसमेड है ना, वो कैसे क्लीन करती है फ्लोर? शी इज ऑन द पटेला. सो प्री पटेलर इज हाउसमेड्स. इंफ्रा पटेलर इज क्लर्जीमेंस. इंफ्रा पटेलर इज क्लर्जीमेंस. हाँ, ठीक है. हाँ अक्षत, व्हाट इज योर डाउट?
थैंक यू, थैंक यू। अक्षत, क्या डाउट है बच्चे, बोलो। अक्षता। अक्षत, क्या डाउट है, बोलो। व्हाट वाज योर डाउट? कुछ डाउट है किसी को? अनहैप्पी ट्रायड, अनहैप्पी ट्रायड का मैंने एक रील बनाया। हाँ, दैट्स अ रील व्हिच आई मेड, वो देख लो एक बार। हाँ, एक रील है, उसमें मैंने वो दिखाया है वो कैसे बनता है वो। हाउसमेड प्रिपेयर फूड, सो प्री पर्टिकुलर, जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग। अच्छा, इंफ्रापर्टिकुलर इज क्लर्जीमैन्स, इंफ्रापर्टिकुलर बर्सा। अरे क्लर्जीमैन मतलब क्या? द पर्सन हु नील्स फॉर प्रेयर। आप जब नील करते हो ना, नील फॉर नीलिंग डाउन फॉर प्रेयर, you don't kneel on the patella, no, you are kneeling on the tibial tuberosity, है ना? So वो infrapatellar bursitis is clergyman's knee. हाँ, fine. Hydronephrosis क्या होता है? Hydronephrosis is swelling of the kidney. अरे बच्चे, स्वप्न में जब यूरेट्रिक स्टोन होता है ना, स्टोन होता है यूरेटर में, तो यूरिन पास नहीं होता, सो बैक प्रेशर इज डेवलप्ड, बैक प्रेशर होता है, सो किडनी इज इन्फ्लेम्ड, उसे बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। ऋषभ, सिंपल है। वेरस मतलब वॉकिंग ऑन द आउटर बॉर्डर ऑफ द फुट, आउटर बॉर्डर ऑफ द फुट पे चलोगे तो वेरस, इनर बॉर्डर ऑफ फुट पे चलोगे तो वैल्गस। हाँ, इनर बॉर्डर पे वैल्गस, आउटर बॉर्डर पे वेरस। ठीक है, ठीक है स्वप्न में, हाइड्रोनेफ्रोसिस क्लियर है। बैक प्रेशर होता है ना, बैक प्रेशर, तो उसकी वजह से वो डायलेट होता है, वो सारे पेल्विस ऐसे बड़े बड़े डायलेट हो जाता है, दैट इज नोन एज हाइड्रोनेफ्रोसिस। इट्स अ इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेल्विस, द कैलाइसिस ऑफ द किडनीज, दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेटर। फाइन बच्चों, थैंक यू सो मच, इट वॉज वेरी नाइस टीचिंग यू ऑल, बिकॉज यू आर ऑल वेरी रेस्पॉन्सिव। बहुत इंटरैक्टिव सेशन था, सो आई मीन टीचिंग ऑल्सो बिकम्स वेरी नाइस, वेरी इंटरैक्टिव। वाल्गस एंगल इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कितना कितना डिविएट हुआ है ना, वो एंगल होता है। ऐसे चलते हैं अंदर की तरफ डिविएट होता है। हाँ, मतलब वाल्गस इज लाइक दिस, नो, तो कितना डिविएट हुआ है ना विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज द एंगल। फाइन, ओके, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, आई विल स्टॉप।